Over the past few days, this program has been intellectually stimulating, reflective, and truly transformative. So I'm here to present the brief summary of the program. The program began with Dr. Tripta Pamar, who laid a strong academic foundation and set the direction of the seminar by highlighting the importance of systematic research and academic leadership. On the second of the seminar, Dr. Kiran Rani Panwar enriched the participants with psychological perspectives relevant to research, helping scholars understand human behavior and its role in academic inquiry. The third day featured with Dr. Neha Verma, who delivered an insightful session on how to write an effective research synopsis, clarifying structure objectives and originality, an essential step for young researchers. On the fourth day, Dr. Anuj Raj discussed crucial methodological aspects such as theme observation, population size, sample size, e-interviews, and data collection tools, enabling participants to understand practical research design. Fifth day was conducted by Dr. Alka Seni, who explained the significance of literature review and its close connection with research methodology, emphasizing critical reading and scholarly engagement. The sixth day was graced by Professor Dr. Devanandan KV, National Secretary of PACE, India, who elaborated on sampling techniques in research, linking theory with real world academic practices. On the seventh day, Professor Dr. Manoj Kumar Singh delivered a forward looking session on transforming research methodology through artificial intelligence and data driven innovations, offering a contemporary dimension to academic research. The eighth day focused on research ethics, where Dr. Smriti Malhotra spoke on ethical publishing, plagiarism, and academic responsibility, an indispensable component of credible research. On ninth day, Dr. Pargat Singh Garsha guided participants on how to identify a genuine research gap, helping scholars move from confusion to clarity in research problem selection. The seminar concluded on the 10th day with Dr. Sushila Narang, who provided practical guidance on how to write a strong and effective research proposal, bringing together all learning of the previous session. Overall, this 10-day seminar was comprehensive, progressive, and highly enriching. As the seminar formally comes to an end today, its impact does not. May the learning we gained here inspire us to reflect, innovate, and contribute meaningfully to the field of education. With this note of gratitude and fulfillment, thank you. Over to Malvika. Thank you, Anita. Thank you so much. I now respectfully invite our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Sarvottam Dikshit of Mahavir University, Meerut, to kindly deliver the validatory address. Ma'am, he may not join now, so please go ahead. If he will join in between, we will welcome with him. Sure, sir. Sure. Okay. So may we have upon the screen now Ms. Asha Junjunwala, who is a PhD scholar at Mahavir University, to please introduce our evaluators, Dr. Sushil Kumar, who is the Assistant Professor, Dhanori PG College. Over to you, Asha. Good afternoon, everybody. So finally, we have some research paper presentation today, and our dear scholars and professors are going to share their views about research paper. But here I will be formally introducing Ma'am Sushila Narang here. Dr. Narang is the principal and professor
grade at Kenway College of Education, Abohar, Punjab. With over 20? Yes. मैम आई थिंक सुशीला नारंग इनका हो चुका है और आज डॉक्टर सुशील कुमार का था. ओके Okay. ओके, प्लीज Just स्किप इट. 1 minute, sir. 1 minute. हेलो डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है? यस सर. हेलो. हाँ हाँ जी सर. मैडम, आई एम प्रोफेसर दीक्षित, वाइस चांसलर, महावीर ओके ओके यूनिवर्सिटी. सर. Okay, but I'm going for mute. I listen each and every lecture. I'll listen. Okay. वेलकम सर, वेलकम. Thank you, Doctor Saab. Sir, if possible, please give us your blessings. My blessings is always with you and your team. Oh, thank you, sir. Thank you I very much, sir. sure believe. Thank you, sir. Okay. Thank you very much, sir. So should we move ahead with the presentation, sir? Yeah, yes, sir. Yes, ma'am. We Okay. should call any participants for the presentation. All right. So these presentation actually reflect the very hard work, preparation, and thoughtful engagement of our participants. And just before we begin, there is a quick guideline for every presenter. Each presenter will be given 10 minutes, and a bell like this will be rung around 6 to 7 minutes after presenting as a reminder to manage your time effectively. You may share your PPT only when your turn is announced, and the timer will start thereafter. Feedback Google form is mandatory to receive your e-certificates, and the link will be shared to you midway through the event. Kindly maintain the event decorum. Avoid any unnecessary mic usage or screen sharing or irrelevant chat messages, please. In case of any technical glitch during a presentation, the presenter will be requested to present at the end of the session. Right? So I will now call out the name of our first presenter, who is Mr. K.R. Sukriti, Ms. K.R. Sukriti, a research scholar, Department of Commerce, and Dr. V. Vimla, Assistant Professor, Department of Commerce of Venushlingam Institute of Home Sciences and Higher Education of Women, Coimbatore. And their research paper is on unveiling growth trajectory of card payment in India, impact of RuPay as an initiative. So please, are the presenters here? Yes, ma'am, I'm here. Okay, please open your video and introduce yourself and then present. In the meantime, our next presenter, who is Dr. Sarita Sharma, please get ready with your presentation. You are next in line, right? Ma'am, you can call next one also, so that there no should be. Okay, so the third one is Monica Singh. Monica Singh, you are third in line, so you may get ready after Dr. Sarita Sharma. Ma'am, I hope PPT is visible. Yes, it's visible, Sukriti. Okay, thank you, ma'am. Just change it to full screen, please. Sure, ma'am, sure. Good afternoon to one and all present here. I am Sukrita KR, full-time research scholar from Venushlingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore. First of all, I would like to thank the organizing team and all the members, those who are part of the seminar, for giving me the opportunity to present my paper. So now I'm going to present my paper titled Unveiling Growth Trajectory of Card Payments in India, Impact of RuPay in Atmanirbhar Bharat Initiative. Sorry, ma'am.
The future growth of the financial service sector, particularly banking, is increasingly shaped by information technology, which has transformed productivity, profitability, operational efficiency, and service delivery. Rapid technological advancements have enabled anytime, anywhere banking, compelling banks to adopt digital innovations to meet rising customer expectations and intense competition. Indian banking sector underwent a significant transformation during the 1990s and 2000s, with a strong shift towards technology-driven services and innovation. Advances in the information technology have facilitated the expansion of electronic and cashless payment system, improving transaction transparency and accessibility. Among various digital payment modes, credit and debit cards remain widely used, playing a crucial role in the evolution of electronic banking and digital payments. Hello, I think I We can't hear connectivity you, is not Sukrita. proper. Ma'am? Sukrita, we couldn't hear you in the middle in case you were saying something. Oh, ma'am, I couldn't able to change my slide. Just a minute, ma'am. Sure. Okay. Yes, now I think it's now clear. Okay, ma'am. So prior international studies highlight the widespread use of debit and credit cards, emphasizing their role in enhancing liquidity, purchasing power, and consumer spending behavior, with safety perceptions significantly influencing payment choice. Research from both developed and developing economies indicates that plastic money is viewed as reliable and widely accepted, with the usage influenced by lifestyle, income status, and technological features. Studies reveal a gradual shift from cash to plastic money driven by technological advancement, convenience, credit facilities, and post-payment options, with adoption expanding beyond high-income groups to salaried and fixed-income segments. Existing literature on RuPay cards emphasize their cost-effectiveness, role in financial inclusion, and integration with initiatives like Jan Dhan Yojana, while also noting awareness and implementation challenges, particularly in rural India. Recent evidence shows that COVID-19 disrupted card usage patterns, highlighting changing dynamics in payment behavior amid the rise of alternative digital payment modes. Therefore, there is a clear research gap in examining the growth trajectory of card payments in India, especially the post-COVID trend and the evolving role of RuPay within the domestic payment ecosystem. Objectives: to examine the trend pattern of the usage of card payments in India amidst the pandemic period, to evaluate the growth of RuPay in India, and to determine its impact on the Atmanirbhar Bharat initiative. Card payments in plastic cards have been part of India's e-banking system, but their usage has grown significantly in the last 5 years, emerging as a major mode of retail payments. Card payments are cash payment mechanisms, enabling consumers to pay for goods and services conveniently without using physical currency. Plastic money includes debit cards, credit cards, ATM cards, and smart cards, supporting withdrawals, purchases, bill payments, fuel, lodging, and e-commerce transactions. India is among the fastest growing card payment markets in the Asia-Pacific region, with substantial growth in both transaction volume and value. RBI data indicates that RuPay accounts for over 65% of debit cards issued in India, highlighting its dominant position in card issuance, while its presence in the credit card market remains limited. So the emergence of the Indian domestic card RuPay. International card networks, particularly Visa and MasterCard, historically dominated the Indian card market, accounting for nearly 90% of credit card transactions, despite most transactions being domestic. Reliance on foreign networks resulted in high processing fees and continuous outflow of transaction value, prompting the RBI to advocate for a domestic card payment system. Consequently, RuPay was introduced as a not-for-profit indigenous card network, enabling cooperative and smaller banks to issue cards at lower cost and expand card penetration. Regulatory developments, including RBI's data localization norms and restrictions on MasterCard in 2021, accelerated bank adoption of RuPay cards. Government support and policy backing strengthened and domestically controlled payment infrastructure, though it all intensified competition with global card networks. Post-demonetization and during COVID-19, card usage patterns fluctuated, highlighting both the resilience and evolving dynamics of India's card payment ecosystem.
Charts 1 and 2 demonstrate the volume and value of monthly card payments in India. Charts 3 and 4 demonstrate the volume and value of yearly card payments in India. So the monthly card payment data fluctuates both volume and value, indicating short-term ups and downs rather than a continuous upward trend. Annual data, however, reveals a steady year-on-year growth in overall card payments, reflecting long-term expansion of card usage in India. Despite overall growth, debit card transactions exhibit a marginal decline in both volume and value during the period of 2020. The post-COVID period has witnessed a shift towards contactless payment modes driven by health concerns and the convenience offered by alternative digital payment platforms. Adoption patterns vary across users, influenced by technological readiness, accessibility, and individual comfort with digital payment technologies. So RuPay, Indian Multinational Financial Service Payment Network. RuPay, derived from rupee and payment, represents indigenous open-loop card payment network envisioned by the RBI to promote financial self-reliance. Developed and operated by National Payment Corporation of India, RuPay is participation of all Indian banks and financial institutions with over 1,100 issuing banks and a strong domestic ownership structure. To cater to diverse customer segments, RuPay offers multiple card variants, including Classic, Platinum, Select, and government scheme-linked cards. RuPay cards provide value-added benefits such as global acceptance, airport launch schemes, insurance coverage, cashback offers, and wellness privileges, enhancing customer appeal. Innovation-driven products like RuPay Contactless support seamless, secure, and offline payments across retail, transit, and service ecosystems, reinforcing RuPay's role in India's evolving digital payment landscape. So this table shows the volume and value, including the trend percentage of RuPay card usage. So RuPay and Atmanirbhar Bharat. The trend indicates strong growth in RuPay card usage over time, with recent stabilization reflecting shifts in consumer payment preferences rather than reduced acceptance, supported by its affordability and growing reach. As an indigenous payment network, RuPay has helped reduce foreign exchange outflows associated with international card networks while ensuring data security through domestic servers. Atmanirbhar Bharat, meaning self-reliance, aims to strengthen India's economic independence and reduce dependence on foreign products and services. The adoption of RuPay cards aligns closely with the objectives of Atmanirbhar Bharat by promoting indigenous financial infrastructure and minimizing reliance on foreign payment systems. The increasing volume and value of RuPay transactions reflects India's progress towards a self-reliant, resilient, and domestically controlled payment ecosystem. So as a conclusion, the volume and value of card payments in India have increased year over year, indicating the overall growth of electronic payment systems. However, debit card usage shows a recent declining trend, largely due to the rapid adoption of contactless and digital payment alternatives, especially in the post-COVID period. Technological advancements, changing consumer preferences, and convenience-driven platforms such as UPI, mobile wallets, QR-based payments, and online transfers have reshaped payment behavior. RuPay has significantly expanded its market share and geographic reach, strengthening the national payment ecosystem through affordable pricing, governance, and domestic control. The use of RuPay cards supports the Atmanirbhar Bharat initiative by reducing dependence on foreign payment networks, ensuring data security, retaining transaction value within the country, and promoting financial inclusion. With India's card payments market projected to grow at a CAGR of 18.7% by 2026. The combined growth of digital payments and indigenous systems like RuPay is expected to contribute to a resilient, self-reliant, and cashless economy. So these are the references used in my study. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. So any questions for our presenter today? Yes, thank you for very wonderful presentation, Sukritha KR. Thank you, sir. You have very nicely explained your work related to the electronic transactions. So, can we move towards the slide number? I think it's 6 or 7, where you have explained the data related to the cards. Sure, sir. Sure.
where it is, I think bar graph is used. 8 Yes, slide, sir. slide number 8. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah. So it is an comparative study. Yes, sir. I have taken the data from 2021. Meanwhile, I think from COVID onwards, Yes. Yes, sir. Yes, sir. Clear 2023. data only I have used. So data Yes, sir. is from RBI. It's from RBI Yes, sir. site. Yes, You sir. got it. Yes, sir. So according to this data, what we can understand by this graphical representation? So the graphical representation meaning is that we can see a growth in the Yeah. volume and value of card usage, sir. But actually, after the rupee introduction of rupee, the usage is still increased. After the COVID-19, actually, after the introduction of rupee, the card usage is increased, sir. But after the COVID, people are actually depending on other alternative modes of payments like UPI, mobile wallet. So we can see a minute decline in the debit card, sir. But still, the usage is still going on. Okay. Okay, good. Very nicely explained. Thank you. Thank you so much, Vita. Thank you, sir. Best Thank you of so luck. much. Thank you, sir. Thank you so much. Next. Thank you, Sukrita. Thank you. Next presenter, Dr. Sarita Sharma. Sarita ji, are you here? Okay, we'll move on to the next. Monica Singh. Monica, are you here to present? Parul Kashyap. Parul, are you there? Snega. Femina. Arjun Naidu. Yes, ma'am. Femina, Hello. can you present now? Yeah, ma'am. All right. So we'll have Femina present on fueling intrinsic motivation for academic achievement in mathematics among secondary school students in Kerala. Yes, ma'am. You may present your PPT, Femina. Yes, ma'am. I'm Femina, research scholar in education, IISc Thrissur, and my pursuing my PhD under the guidance of Professor Dr. Lakshmi, Professor IISc Thrissur. With your permission, ma'am, can I present? Yes, Femina, go ahead. Okay, ma'am. Is it clear? We cannot see anything, Femina. It's not presented yet. Okay, just a minute, ma'am. In the meantime, Arjun Naidu, Nitin Kumar, Rajesh Kumar, anybody here can get ready with their presentation next. Yes, ma'am, please. Rajesh Kumar. Yeah, you can go next. Femina is Okay. presenting right now. You may go next. Okay, ma'am. I'm sharing my PPT. Please wait. Not right now, Rajesh. Femina is presenting. Femina, are you ready with your presentation? Yes, ma'am, but now I can't share my screen. You're not able to Can share you your call screen? me after? Can you call me after one possible? Sure. Rajesh, are you ready with yours? Yes, ma'am. I'm sharing my PPT. Please Okay, wait. so you may present then. Okay. Rajesh will be presenting on exploring India's new education policy 2020. Yes, ma'am. It is visible my PPT. Yes, but it is quite small.
I'm using mobile. That's why it is. Okay. Okay, no problem, Rajesh. Okay. So I'm Rajesh Kumar, a PhD scholar studying the University Pilani. Is my PPT presentation topic is exploring India's new education policy 2020. Now is thanks to Department of Education's Mahavir University Merit. This is organized a seminar on research methodology in humanities and social science. So I'm topic is selected is NEP 2020 ma'am. Now is first question arises, what is national education policy? A bold visions we can say that is NEP 2020 represents the India's first education policy or less 34 years. It reimagines the entire education ecosystem from the early childhood through the higher educations, aiming to transform India into global knowledge superpower by 2040. Key pillars we can consider the universal access to quality education, entire equity and inclusions for all learners, holistic and multidisciplinary learnings, integrations for vocational skills, focus on critical thinking and creativity. Next slide. Now is next slide is saying that it's making education for everyone. It means reaching the marginalized communities, especially focus on the social, economic disadvantaged groups, including the gender, minorities, and scheduled castes and tribes and the students with disabilities. If we will talk the technology, so it is technology equalizers, digital infrastructure and resources aim to bridge a urban-rural divide and bringing the quality education to remote areas through the online platforms. Even in the mother tongue teaching is third is instruction in the regional languages until grade 5th help the student learning more effective and preserves the India's rich linguistic diversity. Now is move to third slide. Re-imaging the what is student learn. It is multidisciplinary approach, breaking silos between arts, science, and commerce for holistic development, value educations, constitutional values, ethics, and citizens woven into learning, art integrations, music, visual arts, and craft incorporated throughout the curriculum. And last is critical thinking also is incorporated, is emphasized on the analysis, problem solving, and logical reasonings. So the students will no longer be forced into the narrow specialization. Instead, they will pursue the diverse interest, combining science and with humanities, commerce with arts, and preparing them for complex, interconnected world. Now is the next PPT. One minute. Next is evaluating the education quality. Is competency-based learning is moving beyond the rote memorizations, they focus on the understanding, applications, analysis, reduced curriculum load, eliminating the content overload to allow the deeper engagement with the core concept and continuous assessment, regular formative and evaluate replaces high stakes board exams as sole the measures of learning. Now is transforming pedagogy. Teachers are being trained in the experimental learnings, project-based activities, and the integrated subjects. The emphasis shift from teaching to facilitating learnings with the student becoming is active participant
rather than the passive recipients. Next PPT, re-imaging what students learn. Is this slide topics include the multidisciplinary approach, breaking silos between art, science, commerce, and holistic development, value education. ये तो हो गया था, please. Next is a skill for the future education. Early exposure, vocational training start from the grade 6 with the internships and hands-on experiences. Industry partnership is collaborations with the business, ensure skill match market demands and employability. Multiple pathways. Student can pursue the academics and vocational tracks with equal respect and opportunities. Next slide. Revolutionizing the college and universities. The first is the flexible degree structure. Multiple entry and exit points with the certificates after 1 year, diploma after 2 years, and degree after 3 or 4 years. Student can re-enter without starting over. Second is research culture, establishing the National Research Foundation with 50,000 crores funding to promote the innovation, interdisciplinary research, and India's global research standing. Third is institution autonomy, graded autonomy for the college based on performing with the top institutions, gaining the freedom in the curriculum design, admissions, and academic operations. Fourth is global standards, the emphasis on the quality accreditations, internationalizations, and allowing top global universities to operate in the India. Next slide. Is navigating implementation challenges. First is funding constraints. NEP required a public education spending of the 6% of GDP, a significant interest from the current level. Teacher training, retraining the millions of the teachers in the new pedagogical methods, domains, times, and resource. Digital divide, ensuring the technology access in the rural, remote areas remaining a critical barrier. Is phase implementation with the clear timelines and milestones, public-private partnership to leverage resources, and is continuous minority and adaptive strategies. Next slide. A collective responsibility for the education transformation. Policymakers allocate the resource, create enabling the policies, and ensure the accountability. Next is civil society. Advocate the marginalized group and monitoring the implementation progress. Third is educators, embrace the new method, pursue continuous learnings, and inspire the students. For parents, support the holistic development and participate actively in the school communities. For industry, partners on the skill development offer internship and co-create curricula. Okay, ma'am. Now is question session. So, Shiv sir, Hello. any questions for our participant? Hello. Yes, sir. Yes, very nicely you have explained your work. And due to the mobile presentation, Yes, sir. it's difficult to, see the screen and read the text Yes, sir. with It is technical. 1.5 power of Some- my eyes. So, Okay, but ma'am. still you have explained very well. Okay, go ahead. Next participant. Thank you. Okay, sir. Femina, are you ready with yours now? Yes, ma'am, I'm ready. Okay, so please Can I present? present yours. Is it visible, ma'am? Yes, Femina, it's visible. You may go ahead. Okay. Okay, my title is Fueling Intrinsic Motivation for Academic Achievement in Mathematics among Secondary School Students in Kerala. Introduction. Mathematics is an important subject during classes 1 to 10 of schooling, and it can help to increase students' abilities. Despite of
Its importance: many students perceive mathematics as difficult and complex subject to learn. This fear often leads to anxiety and the tendency to avoid mathematics in favor of other subjects. Teachers can help to reduce students' fear of mathematics and build long-term interest by making a few updates to the curriculum, using real-life examples and fostering a positive learning environment. Intrinsic motivation. Intrinsic motivation is the internal drive that prompts people to engage in tasks for their own sake, powered by internal rewards rather than external pressure. It's what fuels individuals to pursue interests and activities that bring personal satisfaction and inherent satisfaction, such as learning a new skill simply because it's enjoyable. It stems from fulfilling basic psychological needs and aligns with the self-determination theory, which suggests that human behavior is driven by the need for competence, connection, and autonomy. Self-determination theory. It is a motivation framework developed by Deshi and Ryan that explains human motivation in terms of psychological needs and self-regulation. Core psychological needs: autonomy, feeling in control of one's own learning actions; competence, feeling capable and effective in tasks; relatedness, feeling connected and supported by others. Objectives of the study: there are three objectives: to assess the level of intrinsic motivation towards mathematics among secondary school students; to examine the level of mathematics achievement of secondary school students; to study the relationship between intrinsic motivation and mathematics achievement. Research questions: what is the level of intrinsic motivation towards mathematics among secondary school students? What is the level of mathematics achievement among secondary school students? Is there a significant relationship between intrinsic motivation and mathematics achievement among secondary school students? Methodology: descriptive survey method. Tools and techniques are used: intrinsic motivation inventory and achievement test, statistical tools, mean, standard deviation, Pearson's coefficient of correlation, t-test, bar graph, line graph, grouped bar graph. Then here, statistical analysis. Results: descriptive analysis indicated moderate level of intrinsic motivation in mathematics among secondary school students. Mathematics achievement scores reflected an average level of performance. Correlation analysis showed a positive, statistically significant relationship between intrinsic motivation and mathematics achievement. A comparison between students with high and low intrinsic motivation revealed a significant difference in mathematics achievement, with highly motivated students achieving higher mean score than their less motivated. Findings: the observed positive relationship between intrinsic motivation and achievement supports the central premise of self-determination theory, which emphasizes autonomy, competence, and relatedness, a key drivers of effective learning. Students who reported higher levels of intrinsic motivation tended to show better performance in mathematics, suggesting that motivation is closely linked to sustained engagement and understanding. This finding indicates that when students feel capable of handling mathematical tasks, they are more likely to persist, apply effort, and perform well. Autonomy and relatedness also showed meaningful association with achievement, highlighting the value of providing choice in learning activities and fostering supportive classroom relationships. The results further suggest that instructional practices that promote enjoyment, confidence, and student participation may help reduce mathematics anxiety and improve learning outcomes. These findings align with the emphasis of NEP 2020 on joyful, experiential, and learner-centered education. By creating classrooms that support students' psychological needs, teachers can enhance intrinsic motivation and promote deeper mathematical learning. The study underscores the relevance of self-determination theory in mathematics education and points to the need for pedagogical approaches that prioritize motivation alongside cognitive development. Suggestions: future research may extend the present study by employing the longitudinal designs to examine how intrinsic motivation in mathematics develops over time and influences long-term academic achievement. Experimental or intervention-based studies could also be conducted to evaluate the effectiveness instructional strategies aimed at enhancing autonomy, competence, and relatedness in mathematics classroom. Conclusion: the findings suggest that a classroom which support students' psychological needs can enhance motivation, reduce mathematics anxiety, and foster sustained engagement.
By adopting learner-centered and competence-based approaches, educators can create an environment that nurtures curiosity, critical thinking, and lifelong learning. The strengthening of intrinsic motivation not only improves the mathematics achievement, but also contributes to preparing students for higher order thinking, STEM-related opportunities, and future academic and career success. These insights provide practical guidance for teachers, curriculum planners, and policymakers aiming to make mathematics learning meaningful and engaging. These are some references noted here. And that was the end of my presentation. Thank you so much. Any Well, questions, sir? very good, Pamina. You have a very well structured and planned paper which you have presented over Thank you, here. sir. In that, and very nicely you have explained each and every part up to the conclusion as well as up to the references of this paper, your research. So Thank you, sir. we are talking about the academic achievement in the mathematics. So Yeah. what kind of the achievement we will have by this study, which will be beneficial for the students to understand the mathematics in the classroom, as you said about the NEP 2020. So NEP 2020 के accordingly हम इसमें कहाँ क्या we can add on? Okay, so NEP 2020 also mentioned for realistic mathematics education for students, for Yeah. improving the mathematical skills, for creating skills. So also teachers can provide a relating to nature and also real mathematics education. Some parts were connected to their mathematical topics. So students can easily understand the topic. So That practice initially we are using before 2020. Also, the mathematics professors always use these kinds of the things in their classroom teaching. But NEP 2020, according to that, we must engage the students. Yeah. In this study, just we are focusing towards the IKS only, according to this paper. Okay. But what is the actual conclusion of the part of this particular study? What we have conducted here? So We have experience. correlated the things. We have get the data. We have applied some of the tools like you get the mean, median, mode. All these tools you have used over there. You tried to correlate your work with the NEP 2020. Yes, sir. So what is exactly the main, we can say this will be the beneficial for all each and every student, this particular study? So conceptual understanding of the mathematics topic, competency based, like experiential learning. Experiential, right, very good, very good. Yeah. So experiential learning is important. Yes, That is sir. It's an activity the based main part learning. of the Am I NEP. correct? So Yes, sir. we need to engage our student. Yes, sir. To engage the students, that will be the experiential learning. In place of the blended learning, in place of the chalk and duster method. So that is the main part. Okay, good. Very nice. Thank you so much. Thank you, sir. Our next presenter is Parul Kashyap. Parul, you may please go ahead with your PPT. You're on mute, Parul. We can't hear you. Mute कहाँ है? Hello, hello. Yes, Is my Parul, voice we can hear audible? you. You may Yeah, please give me present. just 5 seconds. Give me just 5 seconds. Sure. Video कैसे? I would request all participants, if you are presenting your paper, please open your videos. अरे वीडियो की जरूरत नहीं है. Monica, you're next, so please get ready. Monica Singh. You can also announce next one also. Next to next. Dr. Smriti and Dr. Vidya, are you there? मत छोड़ दे. Screen नहीं हो रहा. Yes, ma'am. Ma'am, give me 5 Can I seconds. go, ma'am? Screen. Ma'am, just 5 seconds.
Screen share हो रहा है पूरा You can ask someone. Is my screen visible and I am also Yes, visible? yes, Parul, we can see your screen. I'm Please sorry go to ahead. take so much of your time No in setting problem. up. This is my first time presentation. So, hello everyone. Good afternoon. I'm Parul Kashyap, a PhD scholar from Mahavir University, Meerut. My topic is using systematic literature review to examine narcissistic relational dynamics and parenting stress in family mental health research. I suppose uh, my presentation is visible to all of you. My slides are visible. Yes, Hello, Parul, please go ahead. am I audible? Yes, thank you. Thank you so much. In simple words, my paper explains one idea. The couple relationship shapes the mental health of the whole family. When narcissistic patterns exist in a relationship, parenting becomes more stressful and children's emotional well being can be affected. This is a systematic literature review, so my findings are based on existing studies, not new data collected. ये रिसर्च बताती है कि पति पत्नी के रिश्ते पूरे परिवार की मानसिक सेहत को कैसे प्रभावित करते हैं. Slide number 2. Background and rationale. Why this topic is important for all of us. Most mental health studies focus on individuals like one parent has anxiety or the one child has behavior issues. But families don't work like this. They are not isolated individuals. Families work like a connected system. The couple relationship is the emotional base of the family. If the couple relationship is supportive, the parents are supportive, the home feels safe and stable. Parenting becomes easier, children feel secure. But if the relationship between couples is dysfunctional, meaning frequent tensions, emotional withdrawals, or power struggles, then stress increases. This stress can show up as higher parenting stress, or a tense emotional climate in the house, or a negative mental health outcomes in children. The key gap is research often studies narcissism, couple therapy, and parenting stress, all three separately. But my paper brings them into one framework. अक्सर मानसिक स्वास्थ्य को व्यक्ति तक सीमित रखा जाता है, जबकि असली प्रभाव रिश्तों के जरिए पूरे परिवार पर पड़ता है. Next slide. Focus on narcissistic relational dynamics. Here, I want to clarify one important point that narcissistic relational dynamics does not mean every person is a diagnosed narcissist. It means narcissistic traits or patterns in relationship behavior. These traits include emotional entitlement, like my needs matter most, impaired empathy, difficulty understanding partners' feelings, defensive self regulation, getting angry, blaming, or shutting down when they are challenged. In couple relationships, these traits often create emotional asymmetry. One partner gives more, one takes more. Power imbalances, one control decisions or emotional climate. And disruptive repair means conflicts don't get resolved properly. And the important part is these dynamics don't stay limited to the couple. They are spread into parenting and family functioning. नार्सिसिस्टिक रिश्तों में संतुलन नहीं रहता और इसका असर बच्चों तक पहुंच ही जाता है. Slide number 4. Research objectives. What do I exactly aimed to do? This study has 4 clear objectives. First, to understand how narcissistic relational patterns work inside couple relationships, like how they affect emotional safety and conflict repair. Number 2, to study parenting stress as a mediator, means couple problems increase parenting stress, and parenting stress then affects family mental health. Third, to explore spillover effects on the child, that how children are indirectly affected by the couple's emotional environment. And to evaluate couple counseling as preventive mental health care, not only as repair after damage, but as a way to prevent family stress early. हमारे अध्ययन का उद्देश्य समस्या को समझने के साथ साथ समाधान की दिशा दिखाना भी है. Next slide. Research methodology. This study is a systematic literature review. That means I followed a structured approach to search
and analyze research papers. I searched databases like Google Scholar, PsycInfo, PubMed, Scopus Index journals, etc. I included studies that discussed couple relationships, narcissistic traits, narcissistic dynamics, parenting stress, and family mental health outcomes. Then I used thematic synthesis, means which I grouped findings into major themes. This helped me identify repeated patterns across many studies. ये अध्ययन जो है ना मेरा, ये पहले से मौजूद शोधों का वैज्ञानिक विश्लेषण है, कुछ नया नहीं है इसमें. Next slide. Key theoretical frameworks. Now, it means that which theories help me explain my findings. Now, the theories that helped me interpret the research result are: number one, family systems theory. A family is integrated. Stress in a family is not one part, it affects everyone. Spillover hypothesis: emotions and conflict between couples spill into parenting. Emotional security theory: children need emotional safety. Tensions at home threatens that security. Attachment theory: emotional bonding and safety in relationships affects regulations and trust. Together, these all theories, these all frameworks explain how stress travels from couple to parenting and to parenting to child well-being. बच्चे घर के माहौल को बहुत गहराई से महसूस करते हैं, भले ही झगड़ा उनके सामने ना हो. Next slide. Key findings. Theme 1. The first key finding is emotional dominance in narcissistic dynamics. Many studies show that in such relationships, one partner's emotional needs dominate the relationship. The other partner experiences less validation, less emotional support, and the constant emotional pressure. Over time, this causes chronic distress, emotional exhaustion, and reduced psychological safety. This is not a one-time issue. It becomes a long-term emotional environment, a pattern. So, जब रिश्तों में बराबरी नहीं होती, तो एक साथी मानसिक रूप से टूटने लगता है. Now, the key finding, theme 2. The second finding is that parenting stress is not only about the child, it is often relationally generated. Parenting stress becomes high when emotional labor is uneven. One parent manages emotions and responsibilities, other don't. Co-parenting support is weak. One parent is working, other parent is who is a co-parent is their support is weak, and conflict repair is poor. Many studies show parenting stress is a strong mediator. That means couple dysfunction increases parenting stress, and parenting stress then affects both parents' mental health and then children's emotional outcome. इसलिए पालन पोषण का तनाव बच्चों से नहीं, रिश्तों की कमजोरी से भी पैदा होता है. Next slide is key findings, theme 3. The third theme is spillover to children. Children don't just respond to fights. They respond to emotional tension, silence, withdrawal, and unpredictable moods. Studies show children may develop anxiety, emotional dysregulation, like difficulty managing their emotions, and attachment insecurity, matlab feeling unsafe emotionally. Emotional security theory strongly supports this. Children need emotional safety at home, and relational tension threatens that safety. इसका मतलब बच्चे शब्दों से ज्यादा माहौल से सीखते हैं. Next slide is preventive role of couple counseling. This slide explains the hope part prevention. Like evidence support couple counseling as preventive mental health intervention. It helps couple improve emotional regulation, healthy boundaries, communication and repair, and co-parenting coordination. Attachment informed and systemic approaches are especially useful because they work on emotional safety and relational patterns. Digital या hybrid models से access बढ़ जाता है, especially for couples who cannot come regularly due to time, distance or any other stigma. Couple counseling इलाज नहीं है, बल्कि एक रोकथाम का तरीका है. Next slide.
Key contributions. My study contributes in 4 ways. First, it positions couple relationship as mental health gatekeepers, means they strongly influence family well-being. Second, it reframes parenting stress as a relational mechanism, not just personal weakness. Third, it supports preventive mental health models. It helps early, not only after breakdown. Fourth, it integrates narcissism into family system research in a connected way. इसका मतलब Parul, your रिश्तों time is up. Please conclude. यस मैम रिश्तों की सेहत ही मानसिक सेहत की नींव है सो फाइनली my recommendations are family mental health care should include couple level assessment, not only individual. Parenting program should integrate couple counseling components. Digital preventive interventions होनी चाहिए. Professionals को train किया जाना चाहिए. Policy should invest in relational prevention. So नीतियों में रिश्तों की कद्र को रखना बहुत जरूरी है. Conclusion is narcissistic relational dynamics create systemic stress in families. Parenting stress becomes a key pathway that transmits this stress, and children are indirectly affected through the emotional climate at home. Preventive couple counseling can interrupt this cycle very early. So, relationship-based interventions are essential for sustainable family mental health. So, अगर रिश्ते स्वस्थ होंगे तभी तो पीढ़ियां भी स्वस्थ होंगी. Thank you for your attention. And thank you so much. Sir, any I'm done, ma'am. Yeah, definitely. First of all, Parul, you have explained each and every part very good. It's very nice and wonderful presentation. I think it should be the best presentation of this session till now, we can say, in my opinion. और आपने बोला कि ये मेरा फर्स्ट प्रेजेंटेशन है तो आई ऑल्सो विश टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपका फर्स्ट प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो अ मेमोरेबल प्रेजेंटेशन एंड वेरी नाइस टॉपिक यू हैव सेलेक्टेड. टॉपिक भी आपने ऐसा लिया है कि एक्चुअली इट इज द डिमांड ऑफ द डे. Yes, sir. You should work on this topic and you should prepare some project for that. If right now you are in research scholar or somewhere faculty. I am a research scholar as well as I am a couple counselor also. The problem should be very relevant and according to the need of the society. And so many problems arises. जितना हमारा जो सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम में बहुत सारे केसेस सोल्व हो जाएंगे अगर हम इस तरीके से इस तरह की प्रॉब्लम्स पर काम करेंगे. वी ऑल द रिसर्चर्स और द स्टूडेंट्स और द प्रोफेसर्स मस्ट थिंक ऑफ द सोसाइटी, हाउ वी कैन give our best to the society. So it's very good. Sir. Thank you, beta. Thank you so much, sir. I am a marriage counselor already. Thank you. Okay, good. Yeah, thank you. Our next presenter is Monica. Monica, you may please present. पारुल, आप अपना बंद कर दीजिए. Yes, ma'am. Monica's topic is role of microfinance in enhancing income stability among women, small entrepreneurs in Uttar Pradesh. पारुल, आप स्लाइड शेयरिंग बंद कर दीजिए, स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए. According to me, मैंने कर दिया बंद. Just a second. आपका ना स्क्रीन दिख रहा है हमें. Go to Zoom and then stop sharing. Parul, you may go to Zoom, बच्चे. Malvika, kindly coordinate if she is able to listen us. I think. पारुल, आपने ना पावर पॉइंट खोली है. आप एक बार अपना जूम मीटिंग वाला खोलोगे ना? आप अपना जूम मीटिंग वाला खोलो. अच्छा, वी कैन ऑलरेडी सी मोनिका स्क्रीन. ठीक है मोनिका, यू मे प्लीज प्रेजेंट. Good morning, ma'am. Good afternoon. Okay, I think my voice is not coming.
Yes, ma'am. Can you hear me, ma'am? Yes, Monica, we can hear you. We can see your screen also. Just make it full screen, please. Okay. फुल स्क्रीन करके ना आप स्लाइड शो कर दीजिए. मोनिका, जो ऊपर राइट में बटन होता है, यस, फुल स्क्रीन हो गया है. आप स्लाइड शो कर दीजिए. Okay, ma'am. Okay, so my topic is role of microfinance in enhancing income stability among women small enterprises in Uttar Pradesh. So, microfinance refers to the provision of financial services such as small loan, insurance, and remittance to an individual or group excluded from the formal banking sector. So microfinance is a development-oriented financial intervention. And why I choose Uttar Pradesh only? Because of the higher population and diverse economy in Uttar Pradesh. And gender disparity is also there in Uttar Pradesh. UP face the greater social economic disparity in education, employment, or the finance compared to some other state. So that's why I choose the specially Uttar Pradesh. So this is the background of my synopsis or the study. So the evolution of the microfinance in India. Microfinance in India has expanded beyond credit to include the saving, insurance, finance literacy, and skill development. The self-help group model has emerged as a dominant microfinance delivery mechanism, and mechanism through which microfinance enhance income stability is basically access to the capital, the generation of a regular income, the risk management, and the group-based lending and the social capital. So financing literacy is very important in microfinance in India, but the women in Uttar Pradesh, they are not that much aware about the rights they are having regarding the banking system, regarding the rights they are having and the policies provided by them, uh, by the government. So they don't have much information, or they are not much aware about the all the policies or all the microfinance in our India. So financial literacy basically update them about the training of bookkeeping, market information, and the business planning, which enable them to understand what's exactly happening in the market. So, okay, now women entrepreneurship in India. Women entrepreneur contribute to economic growth, employment generation, and social empowerment. Okay, why I choose the basic sector women in here? Because in Uttar Pradesh there is, as I told you, there is a uh, disparity in gender. Means women, they are not equally capable as per the data. We can see that the women are suppressed in Uttar Pradesh. So women owned enterprises in India are largely micro and the small scale in nature. Major sector include the retail trade and handicraft, food processing, tailoring and services. Generally women engage in कि घर में जो टेलरिंग का काम होता है, या चूड़ी बैंगल बनाने के फैक्ट्रीज में वो होती हैं, या मे बी हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनाए हुए बैग, ऑल दीज सेक्टर्स आर मेजरली contributed by the women only. These enterprises typically operate with low capital and limited market access. Why they go for this handicraft, retail trade, and food processing? Because it include a low capital. Because as a women, we don't have such major huge back by the capital. So because we are operate these such kind of business with low capital and limited market access. Challenges faced by the women enterprise is limited access to formal credit, lower level of financial and सही है. digital literacy, restricted mobility, limited exposure. So these are the challenges. And कौन the बोल रही role है? of वैसे देख रही हूँ. बोल कौन रही है? role of microfinance for women entrepreneur. So
what is the role of microfinance? It enables the saving and the risk sharing mechanism, enhance the access to financial and the non-financial support. Relevance of income stability. Income stability means there is a predictable income over time or the consistent income, like 50,000 per month average, 60,000 per month average. So these are the consistency of an income over a period of time. It is a different from income growth or the poverty reduction. Stable income is very important for business continuity and the household security. Okay, so what are the positive effect of this role of microfinance for the on women enterprises? Increase in the household income. Household with women participating in microfinance often report higher and the more regular income. As I say, relevance of the income stability. So this point completely fit here because of the microfinance, their increase in the household income. Empowerment and the decision making. Women with the access of finance, they can take decision. Expansion of enterprise. Microcredit enable women to move from subsistence level activities to commercial. Subsistence means firstly they are into household work only. Later on they move to the service sector also. Next, okay, the review of the literature. Okay, I have come across these studies that is already done by some authors in Uttar Pradesh. As we can see that Dupas and Robinson 2009, Swan and Valentine India to assess impact of SHE on women empowerment, quantitative analysis. Research gap identified. Lack of state-specific study focusing on Uttar Pradesh. Limited focus on income stability instead of income level. Insufficient leakage between the microfinance design and the income output. Limited use of mixed method to explain the income stability mechanism. These are the research gap in my thesis. Absence of the standardized tool for measuring the income stability. Challenges I observed in this is interest burden and the market access issue, lack of education, lack of awareness. These are the some challenges in income stability among the women. Statement of the problem. Women small enterprises face income inconsistency. Microfinance access alone does not ensure the stable income. Studies show the income enhancement, then income instability. There is a need to be examined the role of microfinance in stabilizing income. Objective of my study, I have the primary objective, the secondary and the research portion and the hypothetically of my study. The primary objective is just to know about the income instability among the women small enterprises in Uttar Pradesh. Secondary objective to get to know the access of the microfinances services, to identify the challenges in achieving the income stability, to analyze the relationship between the microfinance and the income stability. So these are the secondary objective of my this thesis study. Research question: does access to microfinance contribute to income stability? Which dimension of microfinance manipulate or implement or affect the income stability most? What challenges limit the effective utilization of microfinances? And the hypothesis of my study is microfinance has no significant impact of income stability. Microfinance dimension have no significant relationship with income stability. Scope of the study. Geographical scope limited to the district of Uttar Pradesh only. I have choose the particular state, that is Uttar Pradesh. So focus on women rather than all the population of Uttar Pradesh. I focuses more mainly on the women. And research method, data and sampling, data collection tool. Ethical consideration, significance of the study, limitations of the study, as we already discussed, because they are restricted to the selected district of Uttar Pradesh. Cross-sectional nature is there, dependence on self-reported data. And the case example of the microfinance intervention in UP is a self-help group movement. Microcredit from the NGOs also. Government programs are, they are not effectively reached to the basic the population of the country.
Key outcome is enhance the income stability, improve economic and social status of the women, and the sustainable small enterprises. And the policy implication of this is, because of this study, they will come to know about the financial literacy and awareness of the market, link finance with the market. They can afford the credit facility. So yeah, and chapter scheme conclusion, basically microfinance play a very important role in enhancing the income stability among women in Uttar Pradesh by providing much needed access to capital, promoting income sources, building financial, um, helping and women socially and economical. However, its impact based on implementation equally, access to market, awareness among the women, and giving them training about their basic rights regarding market, and supporting policy framework. So this is the role of microfinance, income stability among women, small enterprises in Uttar Pradesh. So Shield sir, any questions for our presenter? Yes, very good present. Very nicely, Monica has presented over there about the role of microfinance in enhancing the income of women. We can say an small entrepreneurship. This Yes, sir. focused on that. So I think you have studied a lot about this, and we must focus on the practical problems which will arise when we think of the entrepreneurship. Okay, For the sir. small skill-based programs or the skill-based entrepreneurship we are just trying to build. So is there any part in your study which is focused on that particular problem? Okay, you asking me about the practical problem that Yeah. faced in microfinance for women? Yeah. Practical problems are basically they are irregular in the low income generation. For example, they are dependent on the agriculture, and agriculture depend on the weather condition. These are the seasonable income, right? So irregular in the low income generation, high interest rate. If they get the loan from the bank or from the money lender, they will indulge in high interest rate and the repayment pressure, lack of financial literacy, misuse of the loan for the And known. our topic is also based on that microfinance. Microfinance means we are focusing on very small scale finance which is provided by the bank or the government is also Or promoting the this. insurance company to the, yes, to the sector. So the practical problem you were asking कि लोन अगर लेते भी हैं तो generally they will misuse कि ठीक है लड़की की शादी कर देते हैं और या No, फिर that हम is not कुछ my नया point. घर बना लेते हैं. That is So not my basically point. the microfinance is basically for the women जो business शुरू करना चाहती हैं अपना small scale. नहीं नहीं नहीं, वो घर बनाने के लिए लोन नहीं मिलेगा आपको. अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोन अप्लाई कर रहे हैं, देयर आर सम सर्टेन रूल्स, सर्टेन कंडीशंस दैट यू नीड टू फुलफिल. You must have the GST number, you have some proposal, you bank will verify each and every part, then they will provide you the financial support. Yes sir, yes sir, I know this, but तो वो तो नहीं generally हो वो सकता लोग बच्चे लेते कि नहीं है लोन for this business के लिए. वो लोन हाँ, लेते नहीं. हैं, they are getting loan but not for the business, they getting loan for the कि हमें कुछ मेडिकल बिल देने हैं या सोशल फंक्शंस करने हैं. दैट इज माय प्रॉब्लम कि वो लोग को पता ही नहीं कि इस मनी से हम अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं अगर कुछ मतलब दे डोंट हैव दैट मच अवेयरनेस अबाउट द फाइनेंशियल लिटरेसी. Okay, okay, good. Okay, best of luck. Thank you. Okay, thank you sir. Our next presenter is Dr. Smriti. Dr. Smriti, are you there? Dr. Smriti, Vidya. Yes, ma'am. I am ready. Okay, Vidya, can we have you present? Yes, ma'am. Yes, You ma'am. may Just a share your second. screen and start. Any Yes, other ma'am. presenters today? Just a minute, ma'am.
Is there anybody else who has to present today? Dr. Smriti, Nitin Kumar, Arjun Naidu, Snega, Sarita Sharma. Any of you present today? Ma'am, here is Dr. Smriti. Yes, please get ready with your presentation next. Okay. Can I start, ma'am? Yeah, Vidya, you can start. Yes, ma'am. Good afternoon, all of you. Myself, Dr. Vidya Menaria. मैं अपना लेक्चर जो है वो हिंदी में ही देना चाहूँगी क्योंकि उसमें कंफर्टेबल हूँ। मेरा टाइटल जो है रिसर्च का वो भारतीय शिक्षा संस्कृति नैतिक मूल्यों के संदर्भ में जननायक गोविंद गुरु का योगदान। भारतीय जनजातीय चेतना नैतिक शिक्षा सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत रहे। उन्होंने विशेषतः भील समाज में शिक्षा नैतिक शुद्धता और सामाजिक समरसता की स्थापना की थी। जब हम उनके टाइम टेन्योर की बात करते तो 1858 टू 1931 का जो एज था वो ग्रुप था उनका था। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं स्पेशली ट्राइबल बेल्ट डेवलपमेंट की, तो उस समय में जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस समय में उनके थॉट्स क्या थे, उनकी विचारधारा क्या थी, ऐसे भूले बिसरे लोगों को हमको याद करना बहुत जरूरी लगता था। इसलिए मैंने अपना रिसर्च का टाइटल ये रखा था कि जब भारतीय संविधान ही नहीं बना था तब उनमें इक्वलिटी डेवलपमेंट की बात उन्होंने की थी। यह शोध पत्र भारतीय शिक्षा संस्कृति नैतिक मूल्यों के संदर्भ में जननायक गोविंद गुरु के योगदान का समग्र और विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। गोविंद गुरु ने औपनिवेशिक काल में आदिवासी समाज को शिक्षा आत्मगौरव नैतिक चेतना को जोड़ते हुए सामाजिक पुनर्जागरण की मार्ग प्रस्तुत किया था। उन्होंने औपचारिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा सांस्कृतिक और जीवन उपयोगी लाइफ स्किल की जो एजुकेशन थी उस पर विशेष बल दिया था, जिससे समाज में आत्मनिर्भरता सत्यनिष्ठा और सामाजिक समरसता का विकास हो, जो कि वर्तमान सरकारों का मैनिफेस्टो रहा है। हर सरकार अपना एक उद्देश्य लेकर कार्य करते, जिसमें अभी की सरकार का उद्देश्य स्वावलंबन स्वदेशी और समानता 3 स को लेकर काम कर रही है, जो उस समय में गोविंद गुरु जी ने बताया था। गोविंद गुरु जी की शिक्षण दृष्टि जो थी वह भारतीय संस्कृति की मूल अवधारणाओं धर्म कर्म सेवा सत्ता और अहिंसा से परे थी। उन्होंने विशेषतः भगत आंदोलन और बौद्धिक विकास को बल दिया था। उन्होंने कैरेक्टर डेवलपमेंट सोशल रिफॉर्म्स और कल्चर वैल्यूज को डेवलप किया था। नशा मुक्ति स्त्री सम्मान और सामूहिक श्रम प्रगति संरक्षण इन्वायरमेंट की बात और इक्वलिटी की बात उनके विचारों की प्राथमिकता था। आज के समय में जब मूल्य ह्रास हो रहे हैं मोरल वैल्यूज कम हो रही है तो उस सामाजिक दृष्टि से हमारे सामने कई सारी चुनौतियां हैं। ऐसे समय में गोविंद गुरु के विचारों को पढ़ना समझना बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय शिक्षा और संस्कृति जो कि नैतिकता से परिपूर्ण है, ऐसे क्षेत्रों में बहुआयामी शोध मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च जो है की जा सकती है। उनके विचार जो है इस शोध में यही प्रस्तुत करता है कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का क्या रोल रहता है, शिक्षा किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकती है, जो कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए भी प्रेरणा स्रोत रहे। विशेषतः मूल्य आधारित शिक्षा समावेशी शिक्षा और सांस्कृतिक वैल्यू में गोविंद गुरु का योगदान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही ऐसे कई जननायक हुए जैसे बिरसा मुंडा हुए, उन पर भी केस स्टडी की जा सकती है जो वर्तमान में बहुत प्रासंगिक है। नेक्स्ट, गोविंद गुरु का जीवन परिचय हम देखें तो मैंने बताया था कि 1858 में उन्होंने राजस्थान गुजरात और एमपी के बॉर्डर पर उनका जन्म हुआ था। वह विशेषतः भील अंचल में हुए थे जो ट्राइबल बेल्ट को बड़ा कवर करता था और वो रामानंद संप्रदाय से जुड़े थे। उन्होंने लाइफ टाइम अपना नशा मुक्ति सत्य अहिंसा और सामाजिक एकता पर उन्होंने काम किया था और 1930 का मानगढ़ आंदोलन जो था जो अंग्रेजों के खिलाफ था उन्होंने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट,
शिक्षा के क्षेत्र में गोविंद गुरु का महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि उस समय में शिक्षा के अभी जो संस्थान देखने को मिल रहे, जहाँ लोकल लेवल पर प्राइमरी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, इवन इंटरनेशनल स्कूल तक हमारे यहाँ पर खोले जा चुके हैं, लेकिन उस समय में शिक्षा के ऐसे कोई सशक्त माध्यम नहीं थे। तो उस समय में उन्होंने फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों एजुकेशन पर बल दिया था। तो उस समय में इनफॉर्मल एजुकेशन जो थी वो ज्यादा यूजफुल थी। तो शिक्षा और विद्यालय के अभाव के कारण उन्होंने नैतिक शिक्षा और लाइफ स्किल से जुड़ी हुई बातें कही थी। वे सत्संग, भजन, कीर्तन और कथाओं के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करते थे। सामाजिक जागरण में उन्होंने आत्मसम्मान, अधिकारों की बात, सामाजिक चेतना की बात और मेन फोकस उनका कैरेक्टर बिल्डिंग पर था, चरित्र का विकास करना। उनका ये मानना था कि जब व्यक्ति का चारित्रिक विकास होगा तो समाज डेवलप होगा, जिससे व्यक्ति, संस्था, समाज से राष्ट्र का डेवलपमेंट होगा। तो नेशनल बिल्ड में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। वो स्त्रियों की शिक्षा के भी पक्षधर थे कि स्त्रियां जब तक शिक्षित नहीं होगी, जब तक वुमन एम्पावरमेंट तब तक नहीं आ सकता जब तक महिलाएं जो है वो एजुकेशन नहीं हासिल कर सकती तब तक। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति में उनका फोकस रहा था कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उन्होंने लोक संस्कृति, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनफॉर्मल एजुकेशन उस समय में ज्यादा यूजफुल थी, तो उस समय में लोक संस्कृति, भजन, लोकगीत, सामूहिक पर्वों का ज्यादा महत्व था। तो भारतीय परंपराओं और संस्कृति से उनका विशेष जोड़ था। जैसा कि मैंने बताया कि मानगढ़ आंदोलन जो था वो अंग्रेजों या औपनिवेशिक संस्कृति के खिलाफ था। तो अंग्रेजों की दमनकारी जो नीति थी, उस नीति के विरोध में उन्होंने इस मानगढ़ का जो अभियान जो था वो चलाया था। नेक्स्ट, नैतिक मूल्यों के विकास में उन्होंने नशा मुक्ति का आंदोलन चलाया था कि समाज में चोरी, डकैती और जो ड्रग्स की, जैसे शराब की जो कल्चर पता था, तो वो उन्होंने बंद करने की बात कही थी। सत्य और अहिंसा, जो कि गांधी जी ने भी आजीवन अपनाया था, उस पर भी उन्होंने काम किया था। इक्वलिटी और सामूहिक भाईचारे की बात उन्होंने कही थी। नेक्स्ट, अन्य महत्वपूर्ण योगदानों में उनका सामाजिक धार्मिक सुधार था। धर्म के प्रति वो इक्वलिटी की बात करते थे। शोषण के खिलाफ उन्होंने मानगढ़ आंदोलन चलाया था। भील राज की उन्होंने कल्पना की थी कि भीलों को भी अन्य समाजों के समान उनको भी उतना ही महत्व मिलना जरूरी है। फिर शिक्षा और संस्कृति के संदर्भ में भाषा और संस्कृति के संबंध में भी उन्होंने अपने भजन और कीर्तन के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास किया था। नेक्स्ट, एक महत्वपूर्ण योगदान जो है, इन्हीं योगदानों को ध्यान में रख के गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना 2012 में उदयपुर शहर में की गई थी, राजस्थान के। लेकिन बाद में इस जनजातीय क्षेत्र में शिक्षा, संस्कृति का वास्तविक मूल्य को अभिव्यक्त करने के लिए इसको बांसवाड़ा, जो कि ट्राइबल बेल्ट है, वहां पर इसको शिफ्ट कर दिया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य जो था वो राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिले में एक क्षेत्रीय विश्वविद्यालय था। इस का नाम जो है पहले राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी था, फिर बाद में 2016 में इसका नाम परिवर्तन करके गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी 2016 किया गया था, क्योंकि गोविंद गुरु के योगदान के फलस्वरूप ही जनजाति और विशेषकर भील समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक और शैक्षिक उत्थान जो है वो लाया गया था। तो वर्तमान संदर्भ में गोविंद गुरु जी के योगदान के संदर्भ में इसका नामकरण जो है वो परिवर्तन किया गया था। उनके योगदान को ध्यान में रखकर ही उनके नाम से इस जनजातीय क्षेत्र में क्षेत्रीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक, शैक्षणिक सभी क्षेत्रों में, खेलों में बढ़ावा देने के लिए इस जनजातीय क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, आधुनिक संदर्भ में देखा जाए तो हम देखते हैं कि रिसर्च के बड़े बड़े प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं। काफी सारी कुछ चीजें जो है वो बंद कमरों में या किसी अलग तरह के शोध कार्य भी किए जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब हमारे एक व्यक्ति एक सशक्त नागरिक ही नहीं होगा, व्यक्ति ही विकसित नहीं होगा, व्यक्ति इसमें मोरल डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक शिक्षा नहीं होगी, स्वास्थ्य नहीं होगा, न्याय नहीं होगा, आत्मसम्मान नहीं होगा, तब तक उसमें सशक्तता या डेवलपमेंट की बात नहीं की जा सकती है। तो गोविंद गुरु का योगदान जो है वो शोषण से मुक्ति दिलाना, आत्मनिर्भर दिलाना और संगठित और आत्मसम्मान के साथ जीवन निर्वाह करने की बात करते हैं। नेक्स्ट,
मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अभी रिसर्च की वर्कशॉप चल रही थी, तो मुझे लगा कि अब तक मैंने सारे रिसर्च के ही आर्टिकल दिए थे, तो मेरा थोड़ा सा था कि ऐसा कोई केस स्टडी टाइप आर्टिकल ले जिस पर कई सारे विषयों में शोध कार्य किए जा सकते हैं। तो मेरा ये मानना था गोविंद गुरु से संबंधित ऐसे कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जिन पर रिसर्च की जा सकती है। तो मेन तो केस स्टडी की जा सकती है, और मैं समाजशास्त्र की विद्यार्थी हूँ, तो समाजशास्त्र से जुड़े, समाज से जुड़े हुए संस्कृति, नैतिक मूल्य, शिक्षा और सामाजिक समस्याओं से जुड़े हुए या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उनका अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन इसके एरिया जो है वो बहुआयामी है। सोशल साइंस में इसकी स्टडी की जा सकती है, जो कल्चर, वैल्यू, सामाजिक समस्याओं पर, आत्मनिर्भरता पर, इन सब पर बात की जा सकती है। दूसरा, कला और मानविकी के क्षेत्र, आर्ट और कल्चर से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर, अर्थशास्त्र और व्यवसाय, जैसा कि मैंने बताया, स्वावलंबन, स्वदेशी, समानता, ये सारे जो आर्थिक पक्ष है उन पर भी इनके अध्ययन किए जा सकते हैं। लॉ के संबंध में, विधि के संबंध में उन्होंने स्वतंत्रता के लिए मानगढ़ आंदोलन करवाया था, तो ये सारे न्याय के संदर्भ में अधिकारों की बात करते हैं। जीवन विज्ञान से संबंधित, लाइफ स्केल्स के संबंध में उन्होंने प्रगति संरक्षण के संबंध में भी कुछ अध्ययन किए थे, पेड़ पौधों का, वन संरक्षण पर भी बात की थी। तो वो सारे अध्ययन इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर अध्ययन के क्षेत्र चयनित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, गोविंद गुरु का वर्तमान संदर्भ में वैल्यू जो है वो अनेक चुनौतियां हो सकती है, जैसे कि एक व्यक्ति पर किस तरह से अध्ययन आपका किया टाइम अप हो गया है, आप प्लीज लास्ट स्लाइड पे आ जाइए। ओके, नेक्स्ट। बस हो गया मैम, थैंक यू। सुशील सर, वेरी गुड टू हियर अबाउट द स्टडी। आपका जो अध्ययन है ये, विद्या जी, और ये भी बड़ा अच्छा है कि आपने जो है स्वभाषा, जो हमारी राष्ट्र भाषा है, उसमें आपने उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर। हमारी नेक्स्ट प्रेजेंटर इज डॉक्टर स्मृति। डॉक्टर स्मृति, प्लीज यस, अपने प्रेजेंटेशन को शेयर कर लीजिए। और टॉपिक is sampling techniques, a comprehensive review. yes, ma'am. Any other presenters who have come? Nitin Kumar, Arjun Naidu, मैम दिस इज अर्जुन नायडू। मैम इफ पॉसिबल अगर आप एक स्लॉट बाद मुझे दे दें। You can present next after Dr. Smriti. Thank You you, can ma'am. present Thank you, next. Okay. मैम, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी डॉक्टर स्मृति, आपको सुन पा रहे हैं हम। कैमरा आप देख पा रहे हैं मैम? हाँ जी। स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है मैम। मैं वर्बली आपको अपना प्रेजेंट कर रही हूँ रिसर्च पेपर। मेरा टॉपिक है सैम्पलिंग टेक्निक्स, अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू। एब्स्ट्रैक्ट सैम्पलिंग, जो कि सैम्पलिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द रिसर्च। सैम्पलिंग इज क्रूशियल aspect of research, enabling the researcher to collect the data from a subset of a population to make the inferences about the entire population. This paper provides an overview of sampling techniques, discussing probability and non-probability sampling methods, their advantages and limitations. Introduction: sampling is a process to selecting the subset, the individuals of item from the larger population to collect data. The goal of the sampling to ensure that the sample of population allowing researcher to generalize findings to the larger population. Concept of sampling: the concept of sampling is sampling involves the
selecting the subset the population to make inferences about the users or the items being the subset, the slides. The sample subset of the population selected for the data of the collection. Sampling frame the list of the individuals of items in the population. Probability sampling techniques, sample random sampling. तो सबसे पहले हमारा random sampling if individual has an equal chance to being selected. Stratified sampling population is divided into the subgroups and the random sample are taken from each subgroup. Cluster sampling population is divided into the clusters and random samples are taken from each cluster. Systematic sampling, every individual is selected from the list of the population. Non-probability sampling techniques, convincing sampling, that samples are selected based on ease to access. Judgment sampling, samples are selected based on the researcher's judgment. Quota sampling, samples are selected to meet the specific quota or criteria. These are the non-probability sampling techniques and methods of sampling जो हम methods use करते हैं. तो first is random sampling. Randomly हम किसी भी जो population है उसमें से एक sample को हम select करते हैं randomly. Next होगा हमारा random sampling and the systematic sampling use systematic approach select the samples. तो एक हम जो भी हमारा कोई सिस्टम हमने जो बनाया है हमने first to 10 हमें select करने हैं क्राइटेरिया जो भी हमें पॉपुलेशन में से लेना है सैंपल उसमें होता है हमारा. फिर होता है डिजायर्ड. तो जो भी हमारा डिजायर है जिसको हम चाहते हैं ऑल पॉपुलेशन में से उस डेटा को करते हैं. तो ये है हमारा सैम्पलिंग मेथड्स. पर्पस हम किस पर्पस से सैंपल कर रहे हैं और तो हमारा पूरी पॉपुलेशन है उसमें से हमारा पर्पस हमारा क्या है हम उसके अकॉर्डिंग अपने डेटा को सेलेक्ट करते हैं. तो दीज आर द मेथड्स फॉर सैम्पलिंग. डिटर्मिनेशन ऑफ सैम्पलिंग साइज हम डिटरमाइन करते हैं सैंपल साइज को अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर. इस पॉपुलेशन साइज larger population requires the smaller sample fractions. हम इसको स्मॉल कर लेते हैं और फिर हमारा उसमें जो भी सैंपल्स होते हैं उस तरह से हम ले लेते हैं. फिर हमारा आ जाता है कंपैरिजन ऑफ द सैम्पलिंग टेक्निक्स कि हम अपनी टेक्निक हमें कौन सा सैंपल आपको लेना है अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर रिक्वायरमेंट. एंड इन द लास्ट conclusion to sample is a part of sample or research work is based on the sample because हमें जब सैम्पलिंग अगर हमें करनी जब रिसर्च करनी है तो सैम्पलिंग हमारा एक मेन पार्ट होगा क्योंकि विदाउट सैम्पलिंग रिसर्चर हाउ कैन डू द रिसर्च है ना कैसे कर सकता है. तो ये सारा हमारा पार्ट रिसर्च सैंपल का है. यही है मेरा रेफरेंसेस दिए हुए मैंने. थैंक यू फॉर. हेलो Sir, any questions? हेलो मैडम, तो आपने सैम्पलिंग कैसी की है? आपने जो सैम्पलिंग पर पेपर लिखा है तो आपने सैम्पलिंग कैसी की है?
मैंने तो मेथड्स ही बताया, लेकिन जो मैंने अपनी रिसर्च जो रिसर्च है थी तो आपका ये पेपर था या आपका हाँ, कोई लेक्चर था? ये मेरा पेपर ही बनाया है सर। मैंने तो सिर्फ सैम्पलिंग का मेथड मैंने बताया कि किस तरह से टेक्निक्स इज हम इट यूज करते हैं, मेथड्स इज इट यूज होते हैं। is it a method we that is developed by you? नो We नो have नो। no actually my question is हाँ let me explain you. I just want to हाँ, know what we are doing here. What is our aim to discuss this kind of the research? Are we preparing some methodology? Are we working on some new techniques? Are we नो नो, giving to our research अभी scholars something new? जी, अभी नहीं, मैंने कोई अभी टेक्निक्स नहीं किए, बट आई एम वर्किंग ऑन, कर Okay. रही हूँ मैं उस पर काम सर। Okay, good, madam. Thank you so much for ओके explaining ओके all these things. Thank you, madam. ओके ओके, थैंक यू सर। Arjun, are you ready with your presentation? Ma'am, I just messaged it. Just give me 10 लेफ्ट minutes. कर I'm दूँ? in like middle of something. If you just 10 minutes, if you can allow. Is there anyone else who has to present their paper today? Ma'am, if anyone else is not there, I'll just get to the side and present my presentation. There will be no issue. Yes, please, Arjun. Ma'am, give me just 5 minutes. Ma'am. एक्सक्यूज मी मैम, अगर परमिशन हो तो मुझे कुछ सवाल पूछना है जो लोग पेपर प्रेजेंट कर चुके हैं। पूछ सकते हैं आप। ओके, थैंक यू मैम। मिस्टर राजेश कुमार, क्या आप बता सकते हैं आप एनईपी 220 का क्या फाइंडिंग्स आपने पाया, 2-3 शब्द में? मिस्टर राजेश कुमार, आप है? ओके, द नेक्स्ट वन, फामिना मैम। Excuse me, यस सर। Malvika, madam. Yes, sir. Actually, I think if there is no presentation and we have some discussion forum which will be open after the presentation. So Simran Malik can raise the question after that and after the presentation also. It is the forum is open for all the participants as well as. Okay, and actually I have some other assignment in under UGC Malviya mission. So one another FDP I have to join, and my lecture is also So there. actually, Arjun is getting ready with his Ma'am, presentation. I'm ready. Arjun, please present. I think you're the last presenter, so sir is waiting Yes, for ma'am. Yes, you. ma'am. Okay. Ma'am, do I have to present the PPT from my side or Yes, you will from be your presenting? side, Arjun. Okay, just give me. I think there is some glitches from Arjun side. I would request Dr. Sushil Kumar sir, as I know you have some other assignments, so Yes, I sir. would like to request you till now, whatever you have judged, please find out three most valuable research paper and say something about the seminar. Okay, the actually first of all, thank you so much, sir, for providing me this particular platform and be a part of this 10 days national seminar, which is organized very well, very nicely. और मेरा दीदी को भी नमस्ते बोलना, मनिका दीदी को, ठीक है ना? मेरी मुलाकात अभी नहीं हो पाई है, मैं आऊंगा तब मिलूंगा दीदी से। तो it is very wonderful work that you have conducted, I think frequently.
in every semester, either in annually mode, you are conducting such nice programs, which is very valuable for the growth of the universities or the academic institutions. So as I was just trying to understand the things from the participants, so although each and every presenter is valuable for us to conduct, either to be the part of any kind of the academic activity, and we all are the learners. एंड जब हम लोग भी प्रेजेंट करते थे अपने पेपर्स, तो हम भी वहाँ कुछ ना कुछ सीख करके जाते थे और बड़ा अच्छा लगता था. फर्स्ट प्रेजेंटेशन में काफ़ी हेजिटेशन रही, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें स्मूथ होने लगी. तो आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट ईच एंड एवरी प्रेजेंटर हियर who have nicely presented his or her topic or her work, and each and every work is valuable. So it is very difficult task to evaluate or justify that this particular presenter or this particular work is excellent. Each and every participant has done his or her work very nicely, though in the field of the research, it should be relevant to the society, it should be beneficial to the society or the teaching fraternity or the scholars. So ultimate aim of the research is, in my opinion, it is like that. If we are having some kind of the work which will definitely benefit the society or the human being, so that is very much important. So in my opinion, Parul Kashyap, who is the firstly she presented over there her paper. So Parul Kashyap, I can say she presented very well her presentation. And one another Congratulations, participant Parul. from the I think I forgot to write down the name. Okay, I think Monica from Shobit University, I think so. Well done. So these two presenters, I just want to congratulate both of them, and rest each and every presenter have presented his or her presentation very nicely. This is from my Thank you, side, sir. sir. And Thank you, sir. Thank you very much. and with your permission, sir, with regard, if you will permit me, shall I leave, because I need to join some Sir, I have other not assignment. presented yet. Thank you, sir. Thank you. You may go. Okay, thank you so much, I sir. know very well that your next assignment is also waiting for you. Yes, Thank sir. you, sir. Thank you. Thank you very much. Sir, can I present? Like I was waiting for the presentation part. Yes, you may. Yes, Arjun, you may start, please. Okay, sir. हाँ जी. Sir, is my screen visible? Yes. Okay. First of all, namaste to everyone. My name is Arjun Naidu. I work as a yoga instructor in Morarji Desai National Institute of Yoga. मेरा जो टॉपिक है वो है योगा एज अ कॉस्ट इफेक्टिव प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मॉडल फॉर इंडिया ब्रिजिंग ट्रेडिशनल विजडम विद मॉडर्न पब्लिक हेल्थ. तो टाइटल को अगर हम थोड़ा देखें तो योगा को कैसे हम एक कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर मॉडल बना सकते हैं अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए. बेसिक अगर मैं योग के बारे में बताऊं तो योगा कम फ्रॉम रूट वर्ड संस्कृत रूट वर्ड युज, जिसका मतलब होता है जोड़ना या फिर मिलाना. अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि, जो ओरिजिनेटर है योग के, वो कहते हैं कि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, दैट इज कॉल्ड एज योगा. एंड मॉडर्न लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं कि माइंड बॉडी और सोल या जो स्पिरिट है उसका मिलन, उसको हम योग कहते हैं.
अब इसको कैसे हम अपने हेल्थ को सुधारने के लिए बना सकते हैं, उसके बारे में ये टॉपिक है जिस पे मैंने रिसर्च की है। तो एम एंड ऑब्जेक्टिव जो मेरे स्टडी का था वो था, मैंने एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाया था जिसको मैंने नाम दिया था स्ट्रक्चर्ड ब्रेथ रेगुलेशन एंड अवेयरनेस मॉड्यूल, जिसको हम SBRAM कह सकते हैं। इसको मैंने ये नाम दिया था, जिसमें हम फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं जो एडल्ट के, उसको हम चेक करेंगे। और 4 पैरामीटर मैंने लिए थे एंड मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि SBRM का जो इंटरवेंशन है इन 4 पैरामीटर्स को कैसे इफेक्ट करता है, जिसमें हमने रेस्टिंग हार्ट रेट लिया था, रेस्पिरेटरी रेट लिया था, ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी ली थी और चेस्ट एक्सपेंशन लिया था। मतलब जब बॉडी रेस्ट पे है तब कितना हार्ट रेट है 1 मिनट में, 1 मिनट में कोई पर्सन कितना उसका ब्रीदिंग रेट है, और कितने सेकंड के लिए पर्सन ब्रेथ होल्ड कर सकता है, और चेस्ट एक्सपेंशन की जब मैक्सिमम सांस ली तब चेस्ट का कितना सेंटीमीटर एक्सपैंड हुआ, और जब सांस पूरी छोड़ दी उसका डिफरेंस, ये चेस्ट एक्सपेंशन है, ये हमने मेजर किया। मटेरियल एंड मेथड के ऊपर हम जाएं तो स्टडी डिजाइन, तो मेरा जो स्टडी डिजाइन था वो था 1 ग्रुप प्री पोस्ट इंटरवेंशनल स्टडी। मतलब मैंने एक ही ग्रुप के ऊपर किया, इसमें कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं था, सिंगल ग्रुप लिया। पहले हमने एक बेसलाइन मेजरमेंट की इन सारे पैरामीटर्स की, इंटरवेंशन देने के बाद उसी ग्रुप में ही लास्ट में हमने दोबारा से पैरामीटर चेक कर लिए। तो 1 ग्रुप प्री पोस्ट डिजाइन है, या फिर जिसको हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी कहते हैं। एंड जो सैम्पलिंग मैंने यूज की थी वो कन्वीनियंट सैम्पलिंग थी, जो सामने मेरे को क्राइटेरिया फुलफिल करते हुए पार्टिसिपेंट दिख रहे थे उन्हीं को मैंने यूज किया था। तो टोटल N=30 था, मैंने 30 पार्टिसिपेंट लिए थे। इंक्लूजन क्राइटेरिया था कि पर्सन एडल्ट हो, 18 to 60 ईयर्स की उसकी एज हो, वॉलेंटरली वो पार्टिसिपेट करना चाहते हो, और जो बेसिक ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस है वो फुलफिल कर ले। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया मतलब किनको हमने नहीं चुना, अगर किसी को कोई क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कार्डियोवास्कुलर या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, करंटली कोई अगर इंजरी हो या इलनेस हो, या वो पहले से ही अगर योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी हमने नहीं चुना, या कोई पर्सन मेडिकेशन पे है तो उनको हमने एक्सक्लूड कर दिया। इसके बाद हम आते हैं इंटरवेंशन प्रोटोकॉल पे, लाइक मैंने क्या इंटरवेंशन फॉलो किया। इंटरवेंशन जिसको मैंने नाम दिया था स्ट्रक्चर्ड ब्रेथ रेगुलेशन एंड अवेयरनेस मॉड्यूल, तो इसी मॉड्यूल को हमने एज ए इंटरवेंशन यूज किया, जिसके अंदर हम पार्टिसिपेंट को सुखासन में बैठाते हैं। सुखासन हो सकता है या फिर कोई भी मेडिटेटिव पोस्टर हो सकता है, जैसे कि वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सिद्धासन, बट अभी के लिए हमने सुखासन यूज किया था। पहला इसमें स्टेप है 5 राउंड ऑफ डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग। फिर सेकंड स्टेज में हमने उनको अनुलोम विलोम प्राणायाम कराया, जिसको हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कहते हैं। इसके 9 राउंड कराए थे। फिर भ्रामरी प्राणायाम, जिसे हमिंग भी साउंड वाला प्राणायाम कहते हैं, उसके 9 राउंड कराए। और उसके बाद ब्रेथ अवेयरनेस था। ब्रेथ अवेयरनेस 5 मिनट का था, जिसके अंदर टोटल आपके 4 स्टेजेस थी। पहली स्टेज में हम स्पीड ऑफ ब्रेथ चेक करें कि आपकी जो श्वास है वो किस स्पीड से आ रही है, तेज श्वास आ रही है, धीरे आ रही है, मध्यम आ रही है, उसे 1 मिनट के लिए चेक करना है। फिर डेप्थ ऑफ द ब्रेथ, मतलब आपकी श्वास कितनी गहराई पे जा रही है, कि श्वास गले तक आके बाहर निकल जाती है, छाती तक आके बाहर निकल जाती है। और जैसे अभी हमारा मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, सबकी मोस्टली जो ब्रेथ है वो छाती से आके बाहर निकलती है, जिसको हम शैलो ब्रीदिंग कहते हैं। एंड जब आप डीप स्लीप में होते हैं तभी आपके पेट से ब्रीदिंग हो रही होती है, तो डेप्थ चेक करना। उसके बाद हमने डोमिनेटिंग नॉस्ट्रल कौन सी, आपके राइट नॉस्ट्रल ज्यादा एक्टिव है, लेफ्ट नॉस्ट्रल उस समय ज्यादा एक्टिव है, इस पे ध्यान को बनाने को कहा। और उसके बाद एफर्टलेस ब्रीदिंग, मतलब सब कुछ छोड़ दो और ब्रीदिंग चेक करो, इस समय ब्रीदिंग कैसे चल रही है। तो ये 4 स्टेजेस थे SBRAM प्रोटोकॉल के अंदर। ये इंटरवेंशन हमने पहले बेसलाइन चेक किया 4 पैरामीटर्स की। इंटरवेंशन 1 महीने के लिए हमने दिया, मतलब मंडे टू फ्राइडे हर दिन हमने ये दिया। 1 महीने के बाद हमने दोबारा से पैरामीटर्स चेक किए और फिर हमने रिजल्ट को किया। अब हमारा जो टेस्ट था वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टेस्ट था, तो हमने मतलब ये हमने वेरीफाई किया था शैपिरो विल्क टेस्ट से। ठीक है, अब जो टेस्ट शैपिरो विल्क टेस्ट है हमने इसको वेरीफाई किया था। उसको करने के बाद क्योंकि हमारा टेस्ट जो था वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, इसलिए हमने पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज किया था। पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करने के बाद हमारे पर रिजल्ट क्या क्या आए, जो रेस्टिंग हार्ट रेट है, मतलब वो उसकी वैल्यू कम हो गई। मतलब जिसके हार्ट रेट पहले ज्यादा था, प्रैक्टिस करने के बाद हार्ट रेट कम हो गया, दैट इज अ गुड साइन। रेस्पिरेटरी रेट जो पहले ज्यादा था उसके बाद वो कम हो गया। ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी जो पहले थी अब उससे ज्यादा हो गई, मतलब प्रैक्टिस के बाद पर्सन ज्यादा ब्रेथ होल्ड कर पा रहा है,
चेस्ट एक्सपेंशन पहले से ज्यादा हो गया, तो जिससे हमने कंक्लूड, इवन आप देख सकते हैं जो इफेक्ट साइज है, जो कोहेरेंस डी हमने निकाला है उसकी वैल्यू भी ज्यादा आ रही है। एंड जो नॉर्मल कोहेरेंस डी होता है वो अगर 0.8 से ज्यादा हो तो उसको हम अच्छा रिजल्ट कहते हैं, बट हम हमारे सारे ही मोर देन 1 आ रहे हैं, तो विच शो इट्स अ लार्ज इफेक्ट साइज। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं जो SBRAM है, जो इंटरवेंशन है, वो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर को इंक्रीज करती है, रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी, ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती है, ऑटोनॉमिक फंक्शन इंक्रीज करती है, और SBRAM को हम प्रैक्टिकल यूज में ला सकते हैं। इफ वी कम टू लिमिटेशन ऑफ स्टडी, जो हमने लिमिटेशन फाइंड की, पहली चीज है कि जो सैंपल साइज था वो काफी छोटा था। हमने 30 पार्टिसिपेंट लिए थे जिसको लार्ज स्केल पे किया जा सकता है। 1 महीने का ड्यूरेशन था जिसमें हम आगे फॉलो अप ले सकते हैं, ये भी एक लिमिटेशन है। कंट्रोल ग्रुप नहीं था, तो जब भी कंट्रोल ग्रुप होता है तो रिजल्ट और अच्छे आते हैं। ठीक है, मतलब हमारा इफेक्ट साइज हम बता सकते हैं कि हमारे इंटरवेंशन से ही अच्छा इफेक्ट आ रहा है, बट क्योंकि कंट्रोल ग्रुप नहीं था, ये इसका फ्लॉ था। एंड विद दिस आई कैन कंक्लूड माई स्टडी। जो कंक्लूजन वो ये है कि SBRAM प्रोटोकॉल जो है उसको हम अपने इंडिया के मॉड्यूल में करिकुलम में ला सकते हैं, कंसिडरिंग इट ऑटोनॉमिक एंड रेस्पिरेटरी बेनिफिट। Thank you, Arjun. Thank you. I would request Dr. Simran Malik. Sir, if you like, you may ask a question as an evaluator to Mr. Arjun. Thank you, sir. But I'm not doctor yet. I'm a Okay. research scholar. Okay. Yeah, I have a few questions. Mr. Arjun, kindly tell us what is the benefit of expansions of chest capacity or breathing holding capacity in our day-to-day or mental life? ओके सर, तो जो प्रोटोकॉल में जो पैरामीटर मैंने 4 लिए हैं, 2 है हमारी रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी के, 2 है हमारे ऑटोनॉमिक एफिशिएंसी के। अगर हम रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी को देखें और कंसीडरिंग इंडिया, तो आप देखेंगे कि पॉल्यूशन AQI लेवल सबसे ज्यादा है जो आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को इफेक्ट डालता है। तो ये हम बाहर के आउटसाइड को भले ही ना चेंज कर पाए, बट अपने इंटरनल फंक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये जो हमारी चेस्ट एक्सपेंशन है वो बेसिकली ये दिखा रहा है कि आपके लंग्स कितना एक्सपैंड कर सकते हैं। ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी ये आपको बताता है कि आपके लंग्स कितना अच्छे से रेजिस्टेंस में कितना अच्छा है। तो ये हो गया। डे टू डे लाइफ का जो स्ट्रेस है, जो स्टार्ट कहते हैं, इंडिया कम्स इन वन ऑफ द टॉप 10 कंट्री, वहां जहां पे वर्कलोड एंड जो स्ट्रेस ओरिएंटेशन, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो कंपेरेटिवली ज्यादा है। इवन उसका जो स्टार्ट पहले अगर हम 15 to 20 ईयर्स बैक देखें तो ये यूएस और जो आपके वेस्टर्न कंट्री है उसमें साइकोलॉजिकल इशू ज्यादा थे, इंडिया में कम थे। बट आफ्टर 15 to 20 ईयर ये चीज जो स्टार्ट है वो उल्टे हो गए हैं कि अब इंडिया में वो चीज ज्यादा हो गई है। तो जो हमारे रेस्टिंग हार्ट रेट है वो हमको इसमें हेल्प कर देंगे कि ये बताने के लिए कि हम जो भी वर्क कर रहे हैं वो स्ट्रेस कितना क्रिएट कर रहा है। तो अगर आपका हार्ट रेट की वैल्यू कम आ रही है, विच इज वन ऑफ द गुड साइन कि आप साइकोलॉजिकली और मेंटल स्ट्रेस को भी आप हैंडल कर पा रहे हो। Thank you. Nicely explained. Thank you. Thank you, sir. As I we think draw this Surendra sir have some question. सर सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर की hello. तरफ हूँ। Hello. It's Dr. Surinder Singh. I am one of the clinical doctors. I am not PhD. Can you hear me now? Yes, sir. Yeah. When you chose the participants, when you chosen them, did you choose all the healthy population, or did you choose some kind of illness that can be treated by yoga? When I was choosing the sample you're asking, right? Yeah. So sample we chosen, we have chosen the healthy adults only, and we are making the conclusion on the basis of the data we are receiving after pre and post. Like we did the pre, we got the data,
we give the intervention, and the post result we are getting, it's a good result. On the basis of that, we are saying our intervention went good. So we choose the healthy adult only, and we excluded anyone who's having any health issues. Okay, thank you. Thank you, sir. Malvika. Any other questions? Yes, ma'am. I have a few questions more in others participants. Can I ask? Sure. Yeah. Mr. Rajesh Kumar, are you Simran, here? Simran Malik ji, I think Yes, sir. first of all, we should to finish Okay, all sir. participants. After then, you can ask. Okay, sir. Malvika. Thank you. Malvika. Yeah, sorry, my internet lights went out. So as we draw this memorable event to a close, it's my privilege to invite our distinguished leader to deliver the vote of thanks. So I request Dr. S.P. Singh, sir, to please kindly come. I think you should ask if any paper presenter is remaining there. Yes, sir, I had asked, but nobody is there actually. I would request ask one more time. Is there because anybody who wants to give their presentation? Is there anybody left who has to give their presentation today? and give the opportunity to Simran Malik sir to ask their question also. Thank you, sir. Yeah. Mr. Rajesh Kumar, are you there? Yes. This is a good one. You have to ask the person if there is available. Then you should to ask. Okay. Pass. Femina ma'am, which represent today's the mathematical in secondary high schools in Kerala. Ma'am, are you there? Femina ma'am. Yes, sir. Yes, sir. Ma'am, kindly tell me what kind of data you needed to research this, fulfill this your research, primary data or secondary data? Hello, sir. हाँ मैम, आपने जो डेटा लिया है वो कौन सा Sir, डेटा लिया है? sir, I used the secondary data. Secondary data. Okay, and then sample size, ma'am, source of secondary data. So secondary data for creating sir, I mentioned the references. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Parul, ma'am, are you there? Parul, ma'am. Okay. Monica, ma'am, are you there? Monica, ma'am, are you there? Okay. Bidya, ma'am, are you there? Bidya, ma'am. Okay. यस सर Oh, Bidya, ma'am. आप Okay. सर विद्या बोल रहे हो सर कि नीता? विद्या, मैम. एक्चुअली ओके यस मैम. सर मैम, मेरा एक ही सवाल था, आपका पूरे प्रेजेंटेशन में एक भी रेफरेंस नहीं था. आपने जो बताया बहुत अच्छे बताया, लेकिन मैम ऑथेंटिक सोर्स डालना चाहिए मैम. रेफरेंस आपका शुरू से एंड तक कहीं भी एक भी रेफरेंस नहीं है. मैं काइंडली भविष्य में आप इसको इंक्लूड जरूर कीजिएगा रेफरेंस को. ये सर आपका सजेशन अच्छा है, नाइस सर. बट ये सर है ना रिसर्च पेपर पब्लिक प्रेजेंटेशन था जो ओनली फॉर 5 मिनट्स का था. इट इज ओनली फॉर रिसर्च प्रेजेंटेशन, इट इज नॉट आर्टिकल, यू नो. ओके तो मैम, सर बट रिसर्च एक दो डाल थीसिस और दीजिएगा. रिसर्च एक दो यस सर. एक भी नहीं था यस सर, मैम. यहाँ रिसर्च रेफरेंस की नीड नहीं थी सर, इसलिए मैंने इसको शो नहीं किया. बाकी आर्टिकल बहुत बड़ा था, एनालिटिक नहीं, था, बहुत नो डाउट अच्छा सर. आपने और कैश प्रेजेंट किया, स्टडी नो था. डाउट मैम. तो सर आप अब इतना मैंने नहीं अच्छा डाला एक था. बिल्कुल महाऋषि के बिल्कुल बारे में आप बताए,
वो भी नो डाउट बहुत अच्छा, लेकिन सर। क्या तो होता है ना। रेफरेंस सर मैं ओरली अभी बता देती हूँ। ट्राइब पत्रिका जो है हमारे यहाँ पे एक ट्राइबल पूरा आदिवासी जनजातीय शोध संस्थान है। आप राजस्थान के उदयपुर विजिट किए तो इस से जरूर विजिट किएगा। और मानगढ़ एक जगह बनी हुई है, वो बहुत अच्छा ऐतिहासिक स्मारक है, तो वो अच्छी जगह है। तो ट्राइब इसकी एक पत्रिका निकलती है। इसके अलावा गवर्नमेंट की बहुत सारी पर्यटन विभाग की वेबसाइट है, बहुत सारी अच्छी अच्छी वेबसाइट है जो इसमें है सर। तो मैं सर उसमें मेंशन नहीं कर पाई, तो अभी बता देती हूँ ओरली। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। और सर एनी क्वेश्चन? नो मैम, नो मैम, जस्ट ओके सर, बिकॉज ये सर प्रेजेंटेशन था इसलिए मैंने इसको फ्यू मिनट्स में कंप्लीट किया सर। okay ma'am, thank you ma'am, thank ओके you, सर, थैंक and यू सर। thank you to all, and I have no more questions. ओके, थैंक Malvika ma'am, So please. I now request Dr. S.P. Singh, sir, to please come forward and express our gratitude to all the dignitaries, speakers, participants, and everyone who has contributed to this event. Thank you. Thank you, everyone. Respected Chief Guest, Vice Chancellor Sir, Honorable Resource Person, esteemed members of the PACE India, and academicians, research scholars, faculty members, participants. Really, these days were very nice. As the chief convener of this 10-day national seminar on research methodology in humanities and social sciences, it is both an honor and a privilege for me to address you all at this valedictory session. Over the span of these enriching 10 days, from 7th January to till date, this seminar has emerged as a vibrant academic forum, fostering intellectual dialogue, methodological clarity, and research integrity. This sustained enthusiasm, scholarly interaction, and active participation witnessed throughout the seminar truly reflect its academic success and relevance. Research methodology forms the foundation of sound scholarship, particularly in the humanities and social science, where research not only generates the knowledge but also shapes social understanding, values, and policy perspective. This seminar was thoughtfully designed for strengthen conceptual clarity, enhance methodological skill, and promote ethical and innovation research practices among the scholars and educators. I take opportunity to express my deep sense of gratitude of our distinguished resource person who generously share their expertise and rich academic experience. First day, Dr. Tapta Parmar, Principal, Sant Darbara Singh College of Education for Women, Punjab. Dr. Kiran Rani Pawar, Assistant Professor and Psychologist, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. Dr. Neha Verma, Joint Director and Associate Professor, Center, Multidisciplinary Studies in Research, Subharti University. Dr. Anuj Raj, he is a Professor, Department of Education, Swami Vivekanand, Subharti University. Dr. Alka Saini, Assistant Professor, Dhanori, PG College, Haridwar. Professor Dr. Devanand KV, he is a National Secretary of PACE India and Principal, KPPM, College of Teacher Education, Kerala. Professor Dr. Manoj Kumar Singh is a Group Director, ATMS Groups of Institution, Hapur. Dr. Smriti Malhotra, Assistant Professor, Amity Institute of Education, Amity University, Noida. Dr. Pragat Singh Garcha, Principal, GHG, Khalsa College of Education, Punjab. And Dr. Susila Narang, Principal, Kenway College of Education, Punjab. Your scholarly insights, practical guidance, and interactive session
have immensely benefited our participants and enriched uh, this seminar academically. I would like to place on record my sincere appreciation for PACE India for its continued academic collaboration and commitment to the enhancing the quality of the teacher education and research culture across the nation. My heartfelt congratulations goes to the organizing committee, coordinators, technical teams, volunteers, and especially for uh, our right hand persons like uh, Anita Mehta, Malvika Dadu, Pramod, Asa Junjunwala, etc. They have played a very important role, whose tireless efforts and dedication and teamwork ensured the smooth and successful conduct of this long academic program. I also applaud our research scholars, teachers, and participants for their active engagement, thoughtful discussion, and sincere quest of knowledge. I am confident that the learning from this seminar will be reflected in your future research work, publications, and academic practices. As we conclude today, let us remember the research is continuous and evolving journey. The true outcomes of this seminar lies in applying its insights to the produce quality research that contributes meaningful to societal and nation. With these words, I formally declare the 10-day national seminar on research methodology in humanity and social sciences successfully concluded. I wish you all great success in your academic and research pursuits. So thank you very much. Thank you all. Thank you so much, sir, for such enriching words. I request everyone to please stand for the national anthem. Ma'am, I think I have to declare some more thing also. Thank you everyone. आप सभी लोगों ने इतना लंबा समय हमारे साथ में व्यतीत किया, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है और उम्मीद करता हूँ आगे भी आप लोग हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। आप हमें जोड़िए, हम आपको जोड़ें और इस तरीके से हमारी जर्नी आगे भी बढ़ती रहेगी लर्निंग की, सीखने सिखाने की। आपके जो पेपर प्रेजेंटेशन थे वो भी बहुत ही अच्छे रहे हैं और इससे पहले जितने भी लेक्चर हुए, जो भी आपने सेशन अटेंड किए, उम्मीद है आप सब लोगों ने बहुत कुछ इससे गेन किया होगा और उम्मीद करता हूं कि आगे भी अपना, जैसे मैंने अभी बताया ही था कि आप अपने रिसर्च वर्क को कंटिन्यू करते रहिएगा। उसमें जो कुछ भी आपने सीखा है ऐड ऑन करते जाइए अपने वर्क में और ऐसा करते हुए हम अपने इस लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहें। आप लोगों के सर्टिफिकेट बहुत जल्दी ही आपको मिल जाएंगे और मैं चाहूँगा कि कम से कम 10 दिन हमें इसमें दिए जाएं, जिससे कि मैं अच्छी तरीके से आपके सर्टिफिकेट बना करके आपको भेज सकूं और उम्मीद करूंगा कि आप हमारे कुछ प्लस माइनस पॉइंट हमें जरूर नोट करके बताएंगे कि आपने कैसा महसूस किया इस हमारे सेमिनार में। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि आप इसको आगे कंटिन्यू करें और वैसे भी मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर अपना माइक ऑन करके कुछ हमारे में या हमारे कंट्रीब्यूशन के बारे में, हम लोगों के साथ में जो भी वर्क हुआ है उसके बारे में कुछ कहें तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि बाद में बोलना अलग बात है और अगर एक इस प्लेटफॉर्म पर बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इफ यू हैव एनी ideas, any comments, any suggestions, please give me. Surendra sir, I request सर you. सर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं 10 दिन सारे तो नहीं अटेंड कर सका, लेकिन 7 दिन मैंने अटेंड किया है। फुली एंजॉय, Very nice. everything is good and Thank very you, sir. nice. Thank you very much. Thank you. It is very hard to organize these guys
kind of thing. You did it, and you gave us the immense knowledge. We don't know where we can get it. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you again. Thank you. मैं आपको अपना वो क्या नाम फीडबैक फॉर्म भी दे देता हूँ। मैं भूल गया अभी, थोड़ा पहले और डालना चाहिए, कोई बात नहीं। अभी हमारा ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि आप इसको ना पढ़ पाए। मैं अभी चैट बॉक्स में डालता हूँ, और इसके साथ साथ में और भी आप लोगों से फीडबैक का मैं अपेक्षा करता हूँ। से समथिंग अबाउट अस, अगर आप लोग कुछ बोलना चाहें, क्योंकि आज हमारा फॉर्मली अनाउंसमेंट हो गया है कि आज हमारा लास्ट था। और आपने देखा था कि 10 दिन का सेमिनार के साथ साथ में हमने 1-2 दिन और ऐड ऑन कर लिए। तो ये मैंने थोड़ा सा दुस्साहस किया आप लोगों के साथ। अच्छा है, कुछ न कुछ और लर्निंग होती रहती है। और जो हमारा पेपर प्रेजेंटेशन वाला सेशन है, इसमें भी कुछ लोगों को और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, जो अपना पेपर प्रेजेंट कर पाए हैं। और जो नहीं कर पाए हैं वो आगे नेक्स्ट सेशन में करें, इन फ्यूचर में किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर करें। और इसके अलावा भी अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो अपना रिसर्च पेपर हमें भेज सकते हैं। जिस बुक में भी हम इसको पब्लिश करेंगे उसमें हम आपका भी जोड़ सकते हैं। एनी अदर? आप में से कोई और कुछ हमारे लिए कुछ सजेशन देना चाहते हैं? प्लीज से समथिंग। मालविका, कैसा रहा आपका हमारे साथ जुड़ करके इतना लंबा चौड़ा कार्य करना? आशा और अनीता, आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा। अनीता और मालविका ने अदर प्लेटफॉर्म पर भी कुछ एक्सपीरियंस गेन किए, तो आई वुड लाइक टू आस्क योर एक्सपीरियंस आल्सो। तो मेरे लिए तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। जिन फील्ड्स की शायद थोड़ी बहुत ही नॉलेज थी उसकी भी मिल गई, और साइकोलॉजी रिलेटेड तो बहुत ही पेपर्स प्रेजेंट हुए, तो इट वाज वेरी गुड। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते राम। सर अच्छा रहा सेशन सर, हमने 2 दिन बीच में अटेंड नहीं कर पाया था। कोई बात नहीं, और सर बहुत बढ़िया। पेपर भी अभी इस बार नहीं प्रेजेंट कर पाए, अगली बार अगर होगा तो सर जरूर प्रेजेंट कर पाएंगे। जरूर जरूर करेंगे जरूर जरूर, बहुत बढ़िया। Sir, I would सर like to एक say something. समस्या थी सर। हाँ बताइए। सर तो पिछली बार का सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया था सर, शायद छूट गया डोंट था वरी, मेरा। हो सकता है कि आपका फीडबैक फॉर्म में हमारे पास रिकॉर्ड मिस हो गया हो। आप मुझे व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल भेज दीजिएगा, जिसमें नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट एंड कॉलेज नाम के साथ में भेजेंगे, आपको मिल जाएगा। जी सर। गुड नहीं सर, इवनिंग फीडबैक सर। फॉर्म तो मैं सबमिट किया था, कई बार किया था, लेकिन शायद कोई बात छूट नहीं, गया एक किसी बार तरह। व्हाट्सएप पर भी कर दीजिएगा। होता है, मैं भी कई थोड़ा ओके बिजी सर। हो जाता हूँ, हो सकता है कि ना दे पाया हो। वैसे हमने मोर देन 800 सर्टिफिकेट अब तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। जी ओके। सर, मुझे नहीं हाँ दिखा सर उसमें मेरा। ओके, अनीता जी। यस सर। सर एक्चुअली जैसा कि आपने कहा कि बाद में ही होता है, बाद में चाय ठंडी हो जाती है, बाद में चीजें गायब हो जाती हैं। राइट। सच में सर इट्स वंडरफुल एक्सपीरियंस आपने जो हमें दिया है और जिस तरह से गाइड किया है, इट्स लिटरली आई ओ यू एंड वुड ओ यू लाइक इन माय लाइफ टाइम, होल लाइफ सर। थैंक यू सो मच सर। सर वो चीजें चलिए, बताना, मतलब आई एम नोटिसिंग इट इन माई सेल्फ, मैं उसे एक गैदर करके रख रही हूँ कहीं। बट सच में सर बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस है। आप एक दिन मुझे ये बोलना कि कुछ नहीं होता, सब ठीक होगा, तुम करो तो सही, वाज लाइक ए बेस्ट नहीं रियली थिंग देखिए, दैट आई कोई भी हैव कम कोई अक्रॉस। भी काम आप शुरू कर दीजिए, और जब आप शुरू करेंगे तो कुछ तो होगा। हाँ, यस ये हो सकता है कि बहुत अच्छा ना हो, लेकिन इतना बुरा भी नहीं होगा। अगर फर्स्ट डे आपने कुछ किया है, नेक्स्ट डे उससे बेटर करेंगे, नेक्स्ट डे और उससे अच्छा करेंगे, तो ये प्रोसेस है चलने का। यस सर। रिसर्च में भी यही होता है कि माना आप एक दिन में आप बहुत अच्छे रिसर्चर बन जाएं, ये पॉसिबल नहीं होता है। हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है। तो आप चलना शुरू करिए, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं और स्थिति सब अच्छी होती चली जाती है। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।
मुझे भी आप तीनों चारों पांचों लोगों के साथ में मिलकर के बहुत अच्छा लगा। और सच में हमारे साथ में जुड़ करके जो मुझे अच्छा लगा वो ये इसलिए और अच्छा रहा कि हम लोग हमारी यूनिवर्सिटी में सारे फैकल्टी मेंबर्स इतना वर्क होता है कि कई बार ऐसा लगता है कि आज लगता है कि कोई खाली नहीं है। तो आपने हमारी उस जो खालीपन को पूरा किया। तो थैंक यू वेरी मच। Thank you so आपकी much. लर्निंग भी हुई और हमें सीखने और सिखाने का भी एक मौका मिला। और जो आपने सीखा रियली ये इट इज वंडरफुल। Thank you, आई sir. हैव सीन। Thank you, sir. Thank you Thank you, sir. Sir, I all would like to organizers. say good evening, everybody. Malvika, Anita, Sir, Hi, Asha. Pramodji, all of you are just rocking. एंड सर सीरियसली मैं समझ सकती हूँ कि यूनिवर्सिटी में कितना काम होता है, बिकॉज हमें भी स्कूल में बिल्कुल सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। घर भी आके हम लिटरली वर्क ही कर रहे होते हैं, बी इट अ नॉर्मल डे और बी इट एज एन एग्जाम डे। मतलब हमें एक स्कूल में ना एक इवेंट खत्म नहीं होता, उससे पहले सेकंड इवेंट की हमारे पास पूरी रिपोर्ट आ जाती है कि भाई ये तुम्हारा शेड्यूल है, ये उसका शेड्यूल है। सो आई कैन रियली रिलेट टू दैट, सर। एंड डेफिनेटली इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस। सो बट एक रिक्वेस्ट थी, जैसे आई वांटेड सम क्लैरिटी, अगर हमारी एक ऐसी सेशन हो जाए जिसमें एक लेमैन बच्चा, like even my kids, they are in graduation and they are in senior secondary schools classes, तो मैं चाह रही थी कि एक शॉर्ट ब्रीफ सेशन ऐसी हो कि व्हाट इज पीएचडी एंड व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ पीएचडी एंड व्हाट आर इट्स यूजेस या प्रोस्पेक्ट्स, बिकॉज हम पेरेंट्स चाहे जितने भी बच्चों को समझा दे, वो एक जो स्पीकर या रिसोर्स पर्सन जो समझाएंगे प्रोबेबली वो शायद थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव होगा। Really, we will manage it. We will एक हाफ एन आवर absolutely की try. सेशन हो चलेगा? तो मतलब मैं अपने बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बाकी आई थिंक स्कॉलर्स के लिए भी थोड़ा और इजी हो जाएगा, बिकॉज देर आर सो मेनी टर्म्स। कभी कोई रिसर्च पेपर यूज करता है वर्ड, कभी कोई सिनॉप्सिस यूज करता है। सो व्हाट इज पेपर प्रेजेंटेशन, व्हाट इज रिसर्च पेपर, व्हाट इज सिनॉप्सिस? तो ये छोटी छोटी चीजें, अब जैसे मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे एग्जैक्टली कहाँ क्या रिसर्च करनी है। मैं पढ़ रही हूँ मुझे ऑथर्स मुझे को। मुझे लग रहा है कि जैसे हमने पिछले 10 दिन का वर्कशॉप किया था और अभी 10 दिन का ये हमारा सेमिनार हुआ, तो कुछ ज्यादा ही डीप में जा चुके हैं। अब आपको सिस्टमैटिक तरीके से चलने की आवश्यकता है। यस, वी हाँ, विल ट्राई टू डू। डन सर, क्योंकि ओके डिटेल्स हमें ओके। पता चल गया है कि रिसर्च पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इसमें क्या क्या कंटेंट होंगे, सब कुछ पता है। राइट राइट। बट व्हाट आर द एग्जैक्ट स्टेप्स और हमारी क्या क्या मतलब रिक्वायरमेंट है, वो थोड़ा सा जानना था सर। जरूर जरूर जरूर। डन सर, थैंक यू। ओके ओके मालविका। I now request, thank you, sir. Thank you for taking the feedback also from all of us and getting all what we had to say. हम दबाए बैठे थे शायद अपने hearts में. So thank you for providing us that opportunity. I request everyone to please stand for the national anthem now. मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you to all our थैंक यू dignitaries. एवरीवन। Thank you, sir. फिर Thank मिलेंगे फिर मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में कभी।
थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से आप सब लोगों ने हमारा साथ दिया, उसके लिए बहुत ढेर सारा धन्यवाद और बधाई। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much for providing us this platform also Thank you. to Thank you, learn everyone. and gain more knowledge. I hope everybody got a lot of insight from all the information that they have received and are absorbing. And thank you for bringing a great audience also. Have a pleasant day ahead. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑडियंस तो वास्तव में बहुत अच्छी रही है। हाँ, चलिए, हैव अ नाइस डे। बाय।